A short while from now, we have 4 matches to be played this evening. Just going to read out the names of the captains. And before that, 4 matches. Day number 1, 30th December 2023 in Qatar. Dynamic Sports Ground. The first match is going to be between Black Cat versus CCRC Warriors. Right after that, Techno Media is taking on KCC. Game number 3, Kodak CC versus OBG CC. And the last match for the day number 1, Sheza CC taking on SNR Warriors. 4 crack of the contest on your way. As a great news for the spectators, first 150 people in the gallery. You can already see some people sitting in the gallery. Will be getting the raffle draw and get a chance to win fabulous gift hampers from us. Now also, if you can try and catch the flying ball from Dynamic Sports Ground, you can also get some gift hampers from us. So watch out. And we go for the toss. For the first match, I request the captains of Black Cat and CCRC Warriors, please report immediately for the toss, the game number 1. Toss, League Season 2, brought to you by Techno Media. I request both captains Amit and Irfan get ready for the toss. आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हो ये दोनों कप्तान अब तैयार हैं पहले मुकाबले के लिए एशियन क्रिकेट लीग सीजन 2 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ब्लैक कैट वर्सेस सीसीआरसी वॉरियर्स, ये दोनों कप्तान अब पहला मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं। आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये ग्राफिक के माध्यम से एशियन क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये भव्य दिव्य आयोजन, जिसका डायनामिक स्पोर्ट्स ग्राउंड से सीधा प्रसारण आप तक लेके आती हुई श्रीलाइव की टीम थोड़ी देर के बाद हम इन एक्शन आएंगे और इस मैच का आपको दिखा सुनाने के लिए शैलजा सर हमारे साथ इन इंग्लिश और मैं शिदांग मैं आपके साथ हिंदी कमेंटेटर। आप सभी का स्वागत करते हैं इस एसीएल सीजन 2 में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सारी से रिक्वेस्ट है कि आपको जो टाइम दिया गया उस टाइम को मद्देनजर रखते हुए आपको रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी देर से चल रहे हैं। तो अब टॉस सेरेमनी होगी, शैलजा सर हमारे साथ थोड़ी देर के बाद जुड़ने जाएंगे और उसके बाद हम इन एक्शन आने वाले इस पूरे मैच को लेके। ओवर टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, and we're going to go for the toss. Amish and Irfan, please be here for the toss, guys, for the first match between Black Cat taking on CCRC Warriors. 6 overs match. After 3 overs, there will be a strategic timeout. New rules have been added in this biggest cricket carnival in Qatar. Premier Techno Media presents Asian Cricket League Season 2, powered by Just Us and Auto. You are all welcome to watch this fantastic cricket action. 4 matches to be played. Amit and Irfan, alongside with our umpires, Mr. Manzoor and Niaz. Please join here for the toss. There are right and left side of this ground. I request both captains, please be here for the toss, guys. Amish and Irfan. So Black Cat is taking on CCRC Warriors.
तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो आपके लिए गैलरी बनाई गई है। अगर उस गैलरी में आप बैठते हैं और हमारे यहाँ से आपको कूपन दिए जाएंगे पूरे दिन में, यानी इस पूरी रात में दो वहां पे लकी ड्रॉ होंगे। जो दो लकी विनर्स होंगे उनको टेक्नो मीडिया की तरफ से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन जो दर्शक सिर्फ गैलरी में बैठेंगे, 150 दर्शकों की वहां पे व्यवस्था की गई है। जो पहले 150 दर्शक उस गैलरी में बैठेंगे उन्हीं के इनाम होगा। आप बाहर से होंगे तो आपको नहीं होगा, आपको गैलरी में जाके बैठना है। अगर आप गैलरी में जाके बैठते हैं तो ही आपको कूपन दिया जाएगा और उसमें से ही एक दो विनर पूरे दिन में, यानी 2 मैच के बाद हम एक पहले ड्रॉ निकालेंगे और आखिरी मैच होने के बाद हम एक ड्रॉ निकालने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप उन गैलरी में जाके उस पूरे मैच का आनंद लें और जाते जाते घर में अपने गिफ्ट जरूर लेके जाए। शैलजा सर, That's what exactly I was talking about, Chirag ji. Those people who are standing there, request everyone to kindly take the galleries. For the first 150 spectators who are going to be the gallery will get a chance to win gift hampers as a raffle draw, and also the flying balls. If you can manage to catch, you get gift hampers as well. All set to go for the first game. Irfan is already here waiting for the opposition team captain Amish. You have two captains from the Black Cat Amish, from CCC Valleys Irfan. As before the toss, a warm welcome Irfan and Amish for Asian Cricket League Season 2. Alongside with us the umpires who's going to control this game, Mr. Manzoor and Mr. Niaz. So who's going to spin the coin? Irfan is going to spin the coin. All set for the toss for the game number 1. Here we go. Heads is the call. Tail it is. So who won the toss? Irfan, after toss जीत गया, so what is going to decide? You're going to bat or ball? Batting first. Batting. What is the score you're looking at in Dynamic Sports Ground? 50 to 60? Initial 70. 70 looks very confident. The opposition team captain is looking for 70 runs. I know you got a very strong bowling lineup. So what is the kind of score you want to restrict the opposition team? Yeah, we are trying to defend between the 50, yeah, under the 50. All right, thank you so much, guys. Have a very good one. Game number 1. It's right here in Dynamic Sports on winning the toss, and Irfan is selected to bat first. That's going to be Irfan and his boys is going to bat, and Amish and his boys are going to bowl. That's the news from the center, and we'll be back with the live action within 5 minutes from now. Over to Chirag. धन्यवाद सर जी। तो मैच के बनने वाले पहले मुकाबला अभी यहाँ पे थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है। दोनों टीमें अभी यहाँ पे तैयार हैं। सीसीआरसी वॉरियर्स जिनके कैप्टन का नाम है इरफान। इरफान अपनी टीम को लीड करेंगे। और दूसरी जगह हम बात करें तो ब्लैक कैट जिसे अमीश कैप्टन है वो लीड करने वाले हैं। तो पहला मुकाबला थोड़ी देर के बाद शुरू होने जा रहा है। इन एक्शन आपको देखने को मिलेगा सीधा डायनामिक स्पोर्ट्स ग्राउंड के ऊपर से। सभी को इस पूरी टूर्नामेंट का एक्शन देखने को मिलेगा। थोड़ी देर के बाद हम लाइव एक्शन आने वाले हैं, लेकिन हम सारे स्पॉन्सर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिनके माध्यम से इस पूरी टूर्नामेंट को एक बड़ा बनाने में, सीजन 2 को खास बनाने के लिए इन्होंने सभी ने जो सहयोग किया है उन सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे दर्शकों के लिए फिर से अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, जो हमारे बाईं ओर जो गैलरी बनाई गई है वहां पे 150 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। अगर आप वहां पे जाके बैठते हैं तो आपको एक कूपन दिया जाएगा और जो दर्शक सिर्फ गैलरी में बैठेंगे उनके लिए कूपन होगा। और 2 मैच के बाद एक ड्रॉ निकाला जाएगा जिसमें से एक भाग्यशाली विजेता को एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा टेक्नो मीडिया की तरफ से। और चौथा मैच जैसे ही खत्म होगा दूसरा जो ड्रॉ निकाला जाएगा और टेक्नो मीडिया की तरफ से और गिफ्ट हैम्पर उन्हें दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे जो कंडीशन है वो ध्यान से सुने कि जो दर्शक सिर्फ गैलरी में बैठे हैं उनकी सुविधा है, जो दर्शक गैलरी में नहीं बैठे हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है।
ये आप जरूर ध्यान में रखें। तो घर जाते जाते मैच के आनंद भी लुत्फ उठाएं और घर जाते जाते गिफ्ट भी लेके जाएं। शेल्डर साहब, Absolutely, they're going to get some takeaway from Dynamic Sports Ground. It's all happening in Asian Cricket League Season 2. And once again, welcome everybody, all the cricket lovers. We're going to have a lot of people coming into this ground to watch the exciting matches. Black Cat is taking on the first match. Irfan is winning the toss, and he took to bat first, surprisingly. A wind is blowing towards the commentary box, which is going to be good news for the right-hand batters. If they can get focus on this fine leg region, we can easily get those big sixes up front. They're going to watch it and see what is the kind of plan Irfan has after winning the toss. He elected to bat first in Dynamic Sports Ground. We just had a tournament yesterday, and almost all the captains who won the toss elected to bowl first. Surprisingly, Irfan is elected to bat first, and he will be targeting around 70 runs against a very good bowling lineup of the opposition team captain. Hamish got some super bowlers in his lineup. So once again, welcome everyone, and once again welcome Chirag alongside with me with the Hindi commentary for the very first time in Qatar. Chirag ji, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद and आपको स्वागत कर रहा है Qatar Dynamic Sports Ground में with your crew members. Thank you so much. CCRC had won the toss and elected to bat first. We have the fun 11 of CCRC Valleys: Irfan, Atiq, Wasim, Khalid Pathan, Athab, Mohsin Babu, Faru, Sham, Abbas, and Gujarat. Now this is Asian Cricket League. Black Cat, led by Mish, Salman, Afzal, Tony, Altaf, Sahat, Nachi, Izhar, Abu Khan, Amish, the captain, Ashi, and Haji. So all set to go to umpires. The first match, not so far away. Asian Cricket League Season 2. Black Cat taking on CCRC. So once again requesting all the players, team management and captains, please utilize the strategic timeout after 3 overs. That's the only time you get. Do not forget to tune into Shreelive, which is giving you the live telecast from Dynamic Sports Ground. Subscribe to the channel Shreelive and you can watch this worldwide. I request Irfan, please get ready with your opening batters.
And Amish and his boys is getting into the ground. Welcome, guys. The very first match. Good luck to both teams. CCRC taking on Black Cat. Game number 1. Beautiful atmosphere in Dynamic Sports Ground. Wind is blowing towards the fine leg region. That's exactly the reason Irfan is winning the toss. Elected to bat first. He wants to get some runs on the board up front. Got some very strong batting lineup. So what an atmosphere here in Dynamic Sports Ground. You got an LED screen on the right hand side corner of this ground. All the teams' flags, posters is filled with lot of interesting stuffs here for all the spectators. You got chances to win fabulous gift prizes as well. So we're already getting some crowd in the gallery. And kind attention, the captains, please note the time. 35 minutes allowed to complete the innings. So we have the timer has been set. You need to complete the formalities in 35 minutes. 7:50 p.m. in Qatar, just getting a little bit delayed to start the first match. Can't wait to see that Irfan and his boys coming to make some runs up front. As I just mentioned, the wind is blowing here towards the fine leg region. You can expect some fireworks straight away, some big sixes waiting for the opening batters. They are marshalling into the middle now. It's all set to go for the first match. Black Cat taking on CCRC. 20 franchises are participating in this tournament. It's a big one. 12th of January 2024. It's gone to the grand finale. There will be one champion from all the teams from 4 countries. Volunteers and officials, please not to take your positions and the boundary line as well, just to make sure the boundaries and sixes. So again, reminding everyone, all the players, to make sure the time is allotted to complete the innings. 35 minutes. So we'll be starting 2 minutes from now. First game. 2 umpires was going to control this game, Mr. Manzoor and Mr. Niaz. Official scorer, Mr. Rauf. And we are live. Shreelive, do not forget to subscribe to this channel. You are live now from Dynamic Sports Ground. You can watch these actions from anywhere.
Let's see, we have the live action. Shreelive channel brings you the live action from Dynamic Sports Ground. Getting ready for the first match, Asian Cricket League Season 2, brought to you by Premier Techno Media, powered by Just Us and Auto. Got plenty of sponsors for this tournament. Thank you so much for all their contributions. You have the two opening batters. CCSU Warriors two opening batters Khalid Pathan and Salim Gul, and Afzal is going to start the proceedings from Black Cat. So all set to go. We are live here. Shreelive channel. First ball. Umpires are ready to go. Afzal to start the first over. Here we go. Asian Cricket League Season 2. The first ball. Gentlemen, may I have your attention, please? That's the first run of Asian Cricket League Season 2. Winning the toss, the captain of CCRC Warriors Irfan straight away elected to bat first. Two opening batters, Khalid Pathan and Salim Gul. Another good shot through the gap. Chance. A big chase there, and that's the first boundary. Well driven as yaking the pace of the delivery, and handsomely driven to the covers. What a good shot it was. Perfectly executed one. The boundary number 1 in Asian Cricket League Season 2. From this man, Khalid Pathan moved to 6 from just 2 with a boundary. Two solid opening batters to start the proceedings in this tournament from CCRC Warriors 6-4 no loss. I wanted to try towards the mid wicket. It's a very well driven, executed delivery, completely beaten outside the off stump. Pathan looked really good when he was playing the shot towards the covers. Now on this occasion, it's a good comeback by the bowler. And again, just maybe a small nick. It's no run given. It's a dot ball as well. So after conceding that boundary, it's a good comeback by Afzal. The opposition team captain has decided to bat first, and they will be looking for big runs up front from the very first over power play. Left it over, the first wide. The pass score in this ground, as we all know, around 60 runs. So anything more than 60, it's very, very tough to chase under the lights in Dynamic Sports Ground. But there is a wind flowing towards the fine leg region, and the batters are pretty much aware of this.
That's what he has to target that region. There is protection. Deep mid wicket will cut it off for 2 more runs. The power play in progress. Captain Irfan is elected to bat first. They will be looking for some big runs. 6 overs match. After 3 overs, there will be a strategic timeout. Brilliant. Brilliantly placed and has beaten the man in the short square leg as getting the second boundary. What a good shot. He was in a good position to play that. Right in the middle of the bat. Almost looked like a sweep after the completion of the power play. And good fielding there in the edge of the circle. Just a single. So 14 for no loss. CCRC Warriors, after winning the toss, elected to bat first. The 6 overs match after the power play. All the fielders have been scattered. Yes, we are getting the gallery filled here in Dynamic Sports Ground. First 150 spectators will get a chance to win a gift hamper from us. So don't forget to collect the raffle coupons. Yes, moving on into the second over now. So good news for the spectators who are in the gallery. I'm going to announce something very interesting right after this. $16 for no loss. The big shots, the biggie, the maximum. 6 number 1 of Asian Cricket League from this guys. It's too good. It's CCRC Warriors. Opening batter Khalid Pathan. Some power. He just pulled that beautifully toward the score leg. And absolutely no chance for anyone. The ball has disappeared from Dynamic Sports Ground. Khalid Pathan.
Another one in the air through this deep extra cover. Underneath the field, a tough one. And the batter completed 2 more runs. As all the people who are sitting in the gallery, please, for your kind attention, if you are listening to me, if you can catch the flying ball with single-handedly, one hand catch, if you can catch the ball from the gallery with your one hand, you will get 100 reals. Another one, it's a very good executed delivery, just not allowing the batter to go underneath for a big shot after the completion of the first 2 overs. Score moved to 24 for no loss. CCRC Warriors. Khalid Pathan is looking really good. 22 from 10, 2 boundaries and a massive 6. So once again reminding everyone to tune into Shreelive who want to watch the live action from Dynamic Sports Ground. The first match in progress, alongside with me Mr. Chirag here as well with the Hindi commentary. Is going to join with me very, very soon. Setting up things here after 2 overs. CCRC has got a flyer. Khalid Pathan is one of the very strong batter up front. It's created already some damage for the opposition team. .25 after 2 overs without losing any wickets. CCRC Warriors. So perfectly executed deliveries. No signal from the umpire. To start this 3rd over, Hassan started off with the dot delivery. It's good looking shot over the umpire. It's a long on. As very keen to go for the second run. Yes, no, and settle down for a single. It's all happening here in Dynamic Sports Ground, Qatar. What an atmosphere. Under the lights. The real high standard when it comes to cricket tournament. This is Techno Media. It's bringing the best. It's one of the finest cricket tournament. Got 20 franchises. Moving on. Right after this over, there will be a strategic timeout. Hassan to the left-hand batter. Good shot. Has he got enough? Reckon he has. That's waiting for the umpire score. Raising his hand. That's a 6. Well, it's a boundary, maybe few inches away from the boundary line. The deep mid wicket for the left-hand batter. Just frees his arm. Plenty of width was offered. Salim Gul with his first boundary. CCRZ is cruising towards 30 runs mark. Without reaching to the 3rd over, they are in a good position. It's a good partnership there. Left hand and right hand combination. The very first match. Well driven. Beautifully done. Long off. Tough job. Good fielding there. Has he done really well. Couple of runs more for the batting team. As the captain rightly decided to go for batting first as soon as winning the toss and really making it already some runs on the board, and those people who were sitting in the gallery tried to catch the ball with a single hand. Shot again. Has he got enough? One bounce. Deep square leg. Oh, has he got? Just looked like it was one ball straight to the man, then making no mistake. Deep square leg. The first wicket goes here. It's a big blow.
for the batting team. CCRC Warriors has lost an important wicket. Salim Gul, left-hand batter, wanted to clear that deep square leg. Just managed to get a safe hands of the fielder there, making no mistake. Amish was the fielder there. Well judged catch. 32 for 1. Black Cat is getting an important breakthrough. Just one ball to go to complete the first 3 overs. The new batter joined in the middle for CCRC Warriors. Captain himself, Irfan, decided to walk in after the dismissal of the opening batter. Gul is back in the dugout. They got runs on the board. 1 ball to go. CCRC Warriors 32 for 1. Straight away swing and just maybe getting an edge. He'll retain the strike for the next over. So after the completion for the first 3 was a leg by call by umpire. CCRC Warriors 32 for 1. Now you can take a drinks break, a strategic timeout. It's the only time is allowed to have drinks during this innings. Once again, those people who are sitting in the gallery, if you are listening to me, if you can manage to catch the flying balls from the gallery. Remember, from the gallery with single hand. One-handed catch will give you 100 Qatari Riyal straight away. Sponsored by Mr. Anish Alexander, one of the cricket lovers here, is sponsoring 100 Qatari Riyal. So watch out. The gallery spectators, if you can catch the ball with single hand, not with 2 hands, so try to utilize your fielding skills if you want to win 100 Qatari Riyals. Can expect some big sixes towards that mid-wicket region. A lot of players would be targeting that region, and you've got a fantastic gallery being set. It's all happening in Dynamic Sports Ground, setting up a high standard when it comes to cricket match, tournament, Asian Cricket League, proudly presented by Premier Techno Media and supported by Just Us and Auto as the main sponsor. 20 franchises having a strategic timeout here after 3 overs. So we're going to over to Mr. Chirag is alongside with me in the commentary box. It's a beautiful atmosphere, Chirag, and it's the first time for you in Qatar. कैसे लग रहा है आपके? बहुत बड़ा माहौल. धन्यवाद श्रद्धा सर. और जिस प्रकार से ये पूरी टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, ACL सीजन 2 का ये भव्य दिव्य आयोजन और डायनामिक स्पोर्ट्स ग्राउंड से इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव एक्शन आप यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं. 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में लगे अब तक 32 रन. आप ये देखिए, ये दर्शक है, ये दर्शक इस मैच को देखने के लिए आए, लुत्फ उठाने के लिए आए. आप इन लाइव एक्शन इनको देख सकते हैं. पूरी तरह से इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं सारे दर्शक. उनका भी तहे दिल से स्वागत. ये देखिए, ये अभिवादन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस पूरे ACL की श्रृंखला को. गेंदबाजी में अब परिवर्तन, नए गेंदबाज को अब बुलाया गया है. ओवर नंबर 4 गेंदबाजी में अब परिवर्तन होता हुआ नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब तक का स्कोर 33 रन. निहाल गेंदबाजी के मोर्चे पे सामने होंगे इरफान और खालिद, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली है. 13 गेंदे 23 की वो पारी. इरफान, आप देख रहे हैं दर्शकों के लिए काफी सारे इनाम यहाँ पे रखे गए. अगर आप एक हाथ से कैच लेते हो तो आपको 100 रियाल्स मिलने वाले हैं और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है. और वो गिफ्ट कौन लेके जाएगा ये देखना होगा. निहाल गेंदबाजी के मोर्चे पे राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद, थोड़ा सा वहां पे फील्डिंग में कुछ बदलाव करना चाह रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा गेम को रोका गया
और देखिए अब अगर फील्डिंग की बात की जाए, फील्डिंग जिस प्रकार से लगाई गई है, अगर हम 38 सर्कल के बाहर खिलाड़ी देखे, एक लॉन्ग ऑन है, वहां पे काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ये खिलाड़ी तैनात है। और डीप पॉइंट आप देख सकते हो, लॉन्ग ऑफ, ये मलिंगा एक्शन है। और ये देखिए ये गेंद काफी बाहर है और ये देके जाएगी पंजा, ये पंजा देके जाएगी। ये पहली खराब गेंद, हम हमेशा कहते हैं जब आप पहली गेंद डालने के लिए आते हो सर, तो आपको पहली गेंद अच्छे टिप्पे पे करनी है। अगर आपको जो भी वेरिएशंस करने हैं वो उस गेंद के बाद करो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अगर अच्छा बल्लेबाज है तो वो हमेशा ये चाहता है कि पहली गेंद बल्ले पे ले, और एक अच्छा गेंदबाज क्या चाहता है कि पहली गेंद अच्छे टिप्पे पे गिरे, उसके बाद वो वेरिएशन कर सकते हैं। ये आप रिप्ले में देख रहे हो जिस प्रकार से ये गेंद थी, खराब गेंद थी शेलदार सर। Absolutely. Moving on. Swing and just not getting the timing. Managed to get only a single. After losing the first wicket, they got runs on the board. Chirag, it's not a bad start at all. After winning the toss, Irfan, the captain's right there in the middle. He needs to give a good company out there to Khalid Pathan. Is looking very, very good. One of the very strong opening batter who is going to perform. Looking forward for his performance throughout this tournament. Pathan, power. That's what we are expecting. हम हमेशा कहते हैं कि आपकी अगर शुरुआत अच्छी हो तो फिर आपके लिए कोई बड़े गलतियां नहीं होती आपसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एंकर रोल जिस प्रकार से दिया, ये गेंद खराब थी, पैरों पे करने की कोशिश, वहां पे फील्डर है लेकिन खराब फील्डिंग। ये मिलेंगे 4 रन, जैसे हम इसे कहते हैं भाग्य का चौका, ये लक वाला चौका, क्योंकि फील्डर वहां पे पहुंच गए थे, गेंद हाथ में जरूर लगी थी। आप रिप्ले में जरूर देखना चाहेंगे ये क्या गलतियां हुई। और हम हमेशा कहते हैं एक एक रन काफी मायने रखता है। MS धोनी हमेशा कहते हैं सर कि एक अच्छा बल्लेबाज काफी रन बना सकता है, एक अच्छा गेंदबाज आपके लिए विकेट ले सकता है, लेकिन एक अच्छा फील्डर आपकी टीम के लिए बहुत सारे रन बचा सकता है। तो फील्डिंग पे आपको काफी गौर देना होगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, 43, लॉस ऑफ 1, ओवर नंबर 4 यहां पे चल रहा है। ये महंगा ओवर है सर, क्योंकि पहले अगर 3 ओवर की बात की जाए थोड़ा सा गेम कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद एक जो पंजा गया और उसके बाद ये चौका, एक सिंगल लेग बाय के रूप में वो आया था, तो 10 रन अब तक इस ओवर में खर्च हुए सर। Absolutely. Please remember the time as well to complete the innings. इस Big बार shot. यस, इस बार गेंद को पल्ले के पीछों पीछ लिया और जाती हुई गेंद नहीं रुकने वाली, ये आती हुई 4 रनों के लिए रन मिलेंगे और महंगा चल रहा है। निहाल की अगर बात करें, ये मलिंगा एक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन गेंद का टिप्पा बल्लेबाज के पाले में। देखिए आप फिर से रिप्ले में देखिए जिस प्रकार से ये गेंद थी, गेंद पैर जिस प्रकार से घुटना देख, तमाशा देख, ये चौका आता हुआ टेक्नो मीडिया के सम्मान में। और स्कोर कार्ड की बात की जाए 47 रन टेक्नो मीडिया की तरफ से आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस मैच में अब काफी रन आ रहे हैं इस ओवर से, महंगा ओवर। इस बार छोटी गेंद, उसका पूरा फायदा, ये छक्का नहीं अट्टा, व्हाट अ बैटिंग। ये खराब गेंद है। आप पहले से ही हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा रन लुटाए जा रहे हैं शेलदार सर। और ये देखिए रिप्ले में देखिए क्या वो गेंद थी, गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल ज्यादा थी। बल्लेबाज खालिद कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं छोड़ने वाला, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदें खेली है, 37 पे जा रहे हैं। ये ACL की शुरुआत है, ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर आना पूरा बाकी है, क्योंकि ये शुरुआत है टूर्नामेंट की। और जिस प्रकार से खालिद ने शुरुआत की है, पठान वाला पावर इन्होंने दिखाई दिया है सर। Absolutely. What a good start for CCRC. The 53 team 50 for CCRC. No time. We look at the replay there. You are on live from Dynamic Sports Ground. Plenty of width and it all the time in this world to play that shot towards the mid wicket, clearing the boundary. Some power. Khalid Pathan. और सर जिस प्रकार से उनके कप्तान से आपने जब बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम 70 तक जाएंगे, और वही बात उनके बल्लेबाजों ने दहन में रखी है और वैसी बल्लेबाजी हो रही है। ये होता है कप्तान का भरोसा। अगली गेंद फिर से फुल टॉस, लेकिन इस बार गेंद लॉन्ग ऑन पे गए, खिलाड़ी मौजूद हैं, एक से ज्यादा कुछ नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। स्कोर जा पहुंचा 54, 54 रन। ओवर नंबर 4 अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है सर, क्योंकि अब तक इस ओवर की गेंदी हुई 5, आखिरी गेंद आना शेष। इस ओवर की बात की जाए, 5 गेंदें की है गेंदबाज ने और 21 रन लुटाए हैं, यानी ये काफी महंगा ओवर है। Absolutely. Need to finish things off. One more
बल्लेबाज लगातार आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बैठ रहे हैं घुटना टेक, और बल्लेबाज यही सोच रहे हैं कि आड़े बल्ले से ज्यादा स्ट्रोक खेले जाए। ओवर नंबर 4 यहाँ पे समाप्त होते हुए 4 ओवर की समाप्ति 55 रन। सर आप, मुझे लगता है कतर में बहुत सारा क्रिकेट हम हमेशा देखते हैं, आपने कल ही एक टूर्नामेंट खत्म किया संस्कृति प्रीमियर लीग, और आपने सारे बल्लेबाजों को आप काफी नजदीक से जानते हो, लेकिन सर इस ग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पे जो सम्मानजनक स्कोर है, जो फाइटिंग स्कोर है, वो कितना होना चाहिए? और Well, Chirag ji, on the dynamic sports ground, the pass score जो आप बोलेगा तो कम से कम 60 runs, 60 runs which is going to be the pass score. But if you remember, right after winning the toss, Irfan, the captain, elected to bat first. Maybe because of he found that wind was flowing towards the final leg region. Exactly, हमारे तरफ से आ रहा है हवा. So exactly the reason maybe he thought he'll get some run. Exactly the reason the two batters there in the middle, Khalid Pathan, is striking really well after 4 overs, 55 for 1. And please remember the time is allotted to complete the innings. 4 overs के बाद the score now it's 55. They are in a very good position. So anything more than 665 is going to be very tough to chase. अभी भी 12 गेंदों का खेलाना बाकी है। अगर 12 गेंदों में 12 भी बनेंगे तो 67 70 के आसपास जाएंगे, लेकिन खालिद का बल्ला माशाअल्लाह, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है 17 गेंदों में 38 रन। ओवर नंबर 5 बीच मैदान के अंदर। अब गेंदबाजी में कुछ बदलाव हुए, 22 रन। सलमान फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे आते हुए, सलमान ने पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे, वही सलमान अब स्लॉग ओवर्स में, हम कहते हैं कि स्लॉग ओवर्स में आते हैं तब बल्लेबाज के लिए अभी उनके हाथ में विकेट ज्यादा है, 9 विकेट हाथ में, तो और सेट बल्लेबाज है। इरफान जो अभी अभी आए हैं वो स्ट्राइक पे होंगे, और खालिद जिन्होंने 17 गेंदों में 38 किए वो नॉन स्ट्राइक एंड में सामने वाले बल्लेबाज का खेल देखने के लिए तैयार है। गेंदबाज सलमान, इस बार ये देखिए चेंज ऑफ पेस है, गेंद जिस प्रकार से हाथ से छूटी, बल्लेबाज ने उस गेंद को पढ़ा और 1 रन के साथ अपना छोर बदला, और जो सेट बल्लेबाज है खालिद उनको स्ट्राइक पे लाया। अब स्कोर की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे नाना पाटेकर की बहुत बेहतरीन फिल्म, अब तक 56 रन बने हैं, अभी भी 11 गेंदों का खेलाना बाकी। खालिद के सामने होंगे गेंदबाज सलमान। इस बार थोड़े से बैकफुट पे गए, गेंद को अलग तौर से खेलने की कोशिश, खराब फील्डिंग, ये चौका मिलता हुआ। ये देखिए आप रिप्ले में देखो, एक बार देखो, बार बार देखो, क्या गलतियां हुई है फील्डर से, जजमेंट इतना अच्छा नहीं था। ये देखिए गेंद को जिस प्रकार से खेला, थोड़ा सा बैकफुट पे गए, फिर अलग तरीके से स्ट्रोक को खेला, वहां पे फील्डर थे, ये पूरी तरह से नाकाम, और गेंद इनको टाटा बाय बाय करती हुई 4 रन यहां पे मिलेंगे। स्कोर जा पहुंचा अब 60 रन, 60 ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे, अंपायर के पास वाइड की मांग कर रहे हैं, लेकिन सर मैं हमेशा कहता हूं जब मैं कमेंट्री करता हूं, हर किसी को एक रोल दिया गया है, आपको बल्लेबाजी का रोल है आप करें, हमारे अंपायर्स को उनका रोल बहुत ही अच्छे से निभाने आता है। और अपील हुई थी 60, लॉस ऑफ 1, ओवर नंबर 5वां बीच मैदान के अंदर। इस बार गेंद को आने दिया, फिर से उस गेंद को फ्लिक किया, देखना वहां पे फील्डर मौजूद है, गेंद को जब तक फील्ड किया जाए 1 रन। सब कहीं ना कहीं हम सलमान की तारीफ करेंगे, क्योंकि सलमान ने अब तक यहाँ पे स्कोर को थोड़ा सा हम कहे कि रोका है, वो बाउंड्री नहीं जाती तो बड़े स्ट्रोक कोई नहीं है अब तक, और गेंद इस ओवर की हुई है 4। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी सलमान की, अब तक 17 रन दिए सलमान ने, इस ओवर में अब तक 6 रन, जिसमें एक बींदी गेंद थी। गेंदबाज तैयार, सलमान सामने होंगे बल्लेबाज इरफान, 4 गेंदे 3 रन बना के खेल रहे, फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश, लेकिन अपने आप से इतने खुश नहीं। उन्होंने कहा कि ये गेंद इतनी अच्छी नहीं बल्ले पे आई, थोड़े से नाराज थे। 5वीं ओवर की आखिरी गेंद, क्या सर इस गेंद पे कुछ बड़ा स्ट्रोक आएगा? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जब प्रेशर बनता है तो माहौल बनता है, चाहे वो विकेट हो या फिर बड़े स्ट्रोक। तो आखिरी गेंद है 5 ओवर की, लास्ट बॉल सलमान इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकले, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर उस गेंद को नहीं रोक पाएंगे, ये चौका आता हुआ टेक्नो मीडिया के सम्मान में। ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति, 65 रन, और औसत की बात की जाए 13 का औसत अब तक बना है। सर उनके कप्तान की तारीफ करूंगा, जिस प्रकार से आपने जब उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने टॉस सेरेमनी में कहा कि हम 70 के आसपास जाना चाहेंगे, और अभी भी 6 गेंदों का खेलाना बाकी है सर जी। Absolutely, and one more thing, Chirag ji, the Salman and Irfan.
They both play for the same team, Doha Rockers. And yesterday they were playing in the same team. Now they are playing against each other. And I'll tell you what, Salman is one of the predominant death baller specialists. He came to bowl the final over of Doha Rockers yesterday. And he is the one who really changed the game. Really changed the game for Doha Rockers. And now it is all up to this auctions tournament. Asian Cricket League Season 2 brings all the fantastic players from Qatar. As Irfan rightly anticipated this, more than 70. It looks like they're going to go even more than 75. 65 for 1 after the completion of the 5 overs. 35 minutes is allowed to complete the innings, Chiragji. Now we are left with only 8 minutes. There's a first game. Yes, you're just getting into the group. The final over. आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदे ये दोनों टीमों के लिए विशेष है, खास करके बल्लेबाजी करने वाली टीम सीसीआरसी वॉरियर्स के लिए, जिन्होंने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय अब तक सही साबित होता हुआ। आखिरी 6 गेंदे गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज। थोड़ा सा मैच अभी भी रुका हुआ। Is to ball the final over. 65 of 1. इजहार की पहली गेंद इस बार शरीर पे करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पे अच्छा फील्ड, एक से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर जा पहुंचा 66। खालिद की बात की जाए 43 पे है और अपने अर्धशतक से 7 रन दूर है। सर ये पहला ही मुकाबला है और पहले मुकाबले में देखिए जिस प्रकार से बल्लेबाजों ने मेला लुटाए, रनों का तारीफ करनी होगी बल्लेबाज खालिद की, जिन्होंने 21 गेंदें खेली, 44 बनाए। अच्छी गेंद, फिर से जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश, गेंद को खेल दिया यहां पे मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील किया जाए और एक रन यहां पे मिलेगा इरफान के लिए। स्कोर जा पहुंचा 67, 66 रन। अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी। 44 पे बल्लेबाजी करे खालिद पठान। अब 44 नंबर की बात करते तो सहवाग का नंबर है और वैसे ही कुछ बल्लेबाजी हुई है आज। You can expect some big shot from this man now. बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आएंगे और इनकी पारी हुई समाप्त। 44 की पारी, 50 की ओर जाना चाह रहे थे लेकिन 44 पे इनका खेल खत्म होता हुआ। सर जी got to feel sad for him as he was playing really well. Khalid Pathan wanted to finish things off with that big 6, get that 50 runs mark. Unfortunately finds the man in the long on region, few inches away from the boundary line. He has to depart on this occasion and Khalid Pathan will get lots of big round of applause, appreciation from the dugout, from everybody out here in the Dynamic Sports Ground. First match, 22 deliveries. They smoked some big 6s as well. 44 runs, that's what Pathan has got for the first match. As rightly Irfan was looking forward for that 70 runs mark. They are moving towards that magical number. CCRC Warriors has got a job to do when they come to defend this score. The opposition team, Amish and his boys, got some fantastic batters in the top ends. We'll wait for this. We'll need to complete this innings. 35 minutes, all set to go. Few more deliveries left in this over. The final one. New batter joined there. Straight away in the air. Underneath, 2 fielders. Tough one. Bowler himself just missed an absolute dolly. He put down. Should have been caught. Fairuz, one of the very dangerous batters, walked into the middle after losing Pathan, and CCRC Warriors looking very, very good. They're in search of one of the highest team total. Anything more than 60 in Dynamic Sports Ground will be very difficult to chase down. It's moving on 68. अभी भी आखिरी 2 गेंदें आनी शेष है सर।
दोनों टीमों के लिए विशेष है, लेकिन ये अच्छी गेंदबाजी, ये जड़ वाली गेंदबाजी है। इजहार की तारीफ करेंगे क्योंकि इस ओवर में पूरी तरह से डोमिनेट किया है बल्लेबाजों को, और जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, अब तक 5 गेंदों में पिछले रन आए हैं 4। हमने 5 ओवर की बात करें तो स्कोर था 65, लेकिन अब इस ओवर में आखिरी गेंद बड़े स्ट्रोक की तलाश। यहाँ पे हेलीकॉप्टर को उड़ाना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं। पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश और 2 रन पूरे करते हुए यहाँ पे क्या ये काफी क्लोज मुकाबला हो सकता है। यस, यहाँ पे ये उच्च न्यायपालिका के पास ये पहला डिसीजन आता हुआ, और उच्च न्यायपालिका आपको उसका निर्णय देगी। तब तक हम मैच की ओर बढ़ेंगे क्योंकि 70 तो बने हैं, 71 होंगे या नहीं ये हम आपको जरूर बताएंगे। So the very first time, the third umpire decision is pending here in Dynamic Sports Ground. You're watching one of the finest cricket tournament, setting up the real high standard. Third umpire decision is pending. We're going to have a very close look at. We have a third umpire here. The commentary box is going to be the decision-making process very, very soon. Whether they will reach to 70 runs mark or no. So all are waiting for that. Within few seconds, CCRC Warriors looking forward exactly the runs what Irfan needed. 70 runs from 6 overs. He'll have the decision very soon. Was there a run out? Square leg umpire Mr. Niaz had a very, very close look at it. Still had few doubts whether the batters reached on time to the crease. We'll be back with the decision. In case if they get out, the batters will not be able to move to 70. They will have to be satisfied with 69 runs. Here we go. We'll have the decision pending very soon. A good pick up and throw towards the keepers, and good collection behind the stump by the keeper. The question is whether Fairuz was cruising toward the dangerous end. Has he reached on time? Pick up, and he is banging the stump. Has he reached? I reckon it's going to be a very tight decision here by the third umpire, whether he has reached on time to complete that second run. Fairuz was running toward the dangerous end. The decision is still pending. It's a tough call. Then third umpire is taking his own time to make the decision. Was there a run out or no? As finally given, raised his finger, square leg umpire. At the first time, the third umpire decision. As the decision has been made, run out. So only 1 run considered in the last over, and they have to satisfied with 69. When they come out to field, they need to defend 70 runs from 6 overs. We'll be back very, very soon with the chase. It's all happening here in Dynamic Sports Ground. Very first day of Asian Cricket League Season 2, brought to you by Premier Techno Media, well supported by Justice and Auto. They have the Black Cat taking on CCRC Warriors, 69 runs, and when they come out to bat, Amish and his boys has to get 70 runs from the allotted 6.
one. First match between Black Cat and CCRC Various, heading a target of exactly 70 runs from 6 overs. It's going to be very, very interesting how Irfan and his boys going to defend this. Amish team Black Cat has got some terrific opening batters in the middle order as well. It's going to be very, very interesting how they're going to start this. A tough one to chase under the lights in this ground. The pass score is around 60. They got 10 runs more than the pass score here. I need to defend this. Irfan has got a plan in his and he got plenty of runs. The first 3 overs conceded too many runs. And right after that, Salman bowled really well. Just a run pause and eventually they're getting to 69. There was a third umpire decision. The final delivery, that was a run out as well. 70 runs to win. Game number 1 of Asian Cricket League, brought to you by Premier Techno Media. Powered by Just Us and Auto. 20 franchises are playing here. We have 4 matches to be played this evening. The next one, can't wait to see that. Techno Media is taking on KRCC. Zulfan Salim is going to arrive one more time to Dynamic Sports Ground. He is going to continue his form from where he stopped last night. He was a man of the series, was a man of the... Everything was controlled by Zulfan Salim in the Sanskriti Premier League. Best batter is more than 110 runs. He is going to arrive very soon, right after this innings. We'll have the toss for the next game as well between KRCC and Techno Media. 2 opening batters for Black Cat is going to start the proceedings from the bowling team. It's going to be Salim Gul. It's going to take the proceedings. Amish to strike the first ball. Alongside with him, Tony Archer. Tony Archer to face the first ball, make a part, and Amish, the captain, is on the non-strikers. Here we go. First ball, 70 runs to win. Salim Gul. Straight away swing and a miss. Right on the money. Salim Gul there with the dot ball to start. "70 run is the target. It's a tough one under the lights in Dynamic Sports Ground. They need to get a good start. Well played towards the long on. Fielder there. It's a power play in progress. Only 3 fielders allowed to field outside the 30-yard circle. It's all happening here in Dynamic Sports. Got a fantastic gallery here as well. The mid-wicket region. Well played. Stand and deliver. 1 bounce racing towards the boundary. Number 1. That's what exactly they needed to strike really well in the first over. 70 is the target. They need to get more than 10 runs in the first power play. Exactly, these 2 batters out there in the middle. Very, very experienced players. For Black Cat, the captain himself. Alongside with him, an experienced campaigner, Tony Archer. Good looking shot. Protection. Long on region, bit of fumble. Yes and no, and finally settled down for a single. So what they would be looking at around to more than 10 and 12 to 15 runs in the power play will give them a good foundation. It's a tough target to chase down 70 runs from 6 overs. Good looking shot towards that. Brilliantly done. 1 bounce at the boundary. It was in a good position when he played that. One of the favorite regions. They are making it in the very first over. It's a boundary number 2. They moved to 10 already. And 1 ball to go. Black Cat has got a flyer. CCRC Warriors Irfan needs to bring his one of the specialist bowler to get a big breakthrough.
And up against two opening batters, looking good. Shot again, and no chance for anyone. Placement has been superb, right in the middle of the bat, or to the square leg region, bottom boundary again. That's a brilliant start. They needed to get more than 10 runs in the power play. Got what exactly they needed. They moved to 14 runs. Look at that, plenty of width was given. It just had to place it towards the vacant region. An absolutely vacant deep square leg. Got the reward for that. Placement superb. After the completion of the first over, 14 runs coming without losing any wickets for Black Cats. Need 57 more runs from the remaining 30 deliveries. It's going to be an interesting, very interesting match in progress. The first match of Asian Cricket League Season 2, brought to you by Techno Media in association with Just As an Auto. Remember, the people who are sitting in the gallery, watch out for the flying balls coming to you. If you can manage to catch the ball single-handedly with one hand, you will get a gift hamper, cash prize of 100 Qatari Riyal. Presented, sponsored by Mr. Alexander, one of the cricket lovers. Anish Alexander is giving away that 100 Qatari Riyal gift voucher for the single-handed catcher only from the gallery. Atiq to start the second over. 14 runs coming from the very first, an expensive one. And Amish on strike, the captain. Tony Archer 9 from 4. Well done, right on the money. Atiq, the first ball dot outside the off stump. The skipper out there in the middle, and from Black Cat Amish. He has been asked to bowl first, and the opposition team has got some runs on their ball. 70 is the target. Shuffling across the crease and played towards the long off. There is a protection, just a single. Good looking shot, again long off, will cut it off, just a single. I request the captains for the next game, Zulfan Salim, captain of Techno Media, please be here for the toss. And the opposition team captain from KRCC, Mr. Riaz or Afzal, please be here for the toss, guys. What a good shot played towards the covers region. There's no fielder there, has a long chase. Good fielding effort. The batter has a chance to come back for the third run. Good running between the wickets. I need to run really hard. This is a tough target is being set by the opposition team. 70 runs from 6 overs in Dynamic Sports Ground. Under the lights is never easy. They got a flying start here. Two opening batters, Amish and Tony Archer. Good partnership there in the middle. Too early for the shot, racing towards the boundary, beaten everyone including the keeper. It's a welcome boundary again, they will take it. $23 for no loss. $23 for no loss.
Underneath the ball, in the air, and a tough one. 12 judge catch in the deep square leg. It was in the air for long time. What a good catch it is to dismiss one of the very strong batter. They were moving on very nicely. 23 for 1 now. In the hunt of getting to the 70 runs mark in the allotted 6 overs. They lost an important wicket. Tony Archer has to depart on this occasion. Was to clear that square leg. Just managed to get the safe hands of the fielder. They're making no mistake. First blow for the team. Black Cat needs to find another good batter to give a good company out there to the skipper. Amish is still there. He needs to play an anchor role. So getting a breakthrough, a much needed one for the fielding team. Black Cat 23 for 1. After the completion of 2 overs, Sesiasi Warriors has got 69. And another bowler comes, it's Ataur. Good looking shot protection. There's a long on region. Good fielding. A bit of fumble. Yes and no. Finally settled down for a single. Now this is going to be very interesting. This over. First 2 overs considered 23 runs. They lost the wicket. They need to capitalize on the momentum. In the air, back of the leg, tough one for the bowler. And no run, chance for a run out. A direct throw would have been very interesting. Now there's a good backing up there. Well, batsman actually fell down in the crease. And luckily, fortunately for him, there was no direct hit to the stump towards the bowling end. Survives. And once again, as a reminder for the people who are sitting in the gallery, you have a chance to win 100 Qatari Riyal gift voucher if you can manage to catch the ball. In the air, it's a good shot. No chance. Has he fielder? Reckon it's a boundary. Waiting for the umpire's call. It's probably, yes, it's a maximum. All the way to this between long on and long offs. Cleared the boundary in style. And needed this big shot after losing the big wicket of Tony. A new batter joined there in the middle. Sahad played that phenomenal hit. That is 6 number 1 for him. Swing and a miss. It's a good comeback by the ball after conceding that 6 from the last delivery. 34-1. 2 balls left in this over. Black Cat is on a roll here. They need to chase down the 70 runs. Still require 41 runs from 20 deliveries. A very interesting chase is. In the air, through the gap, deep fine leg has a tough job there. Oh, missed it. Fumble, and it's a boundary. The much needed one. They're moving very nicely at this moment. And remember, though, the spectator, they have a family and ladies the lounge here as well. The kids can also enjoy the cricket match. Right side of this commentary box, you have a family kids lounge. So those people who are coming with your family, you can put your kids in the family right there in the Asian Cricket League Season 2 as bringing the best example of setting a high standard when it comes to cricket tournament. Got a fantastic place for the family and kids to enjoy the cricket match as well. Thank you, ladies, there. Swing and a miss. It's a dot ball. Three overs have been bowled. 34 for 170 is the target.
37 more runs to win. Chirag is right now next to me. It's going to be a very interesting chase, Chirag. 34 runs is what they need. Now that they got from the first 3 overs. एक ही wicket गिरा हुआ है अभी तक. And it's going to be very, very interesting how they're going to move ahead. Irfan has got some plenty of bowlers to defend these targets. Over to you. धन्यवाद सर। और सर हम हमेशा कहते हैं कि जब मुकाबले बड़े होते हैं तो फिर मज़ा आता है। और इस मैच की बात करें, ये देखिए आप, ये बहुत सारे आप नज़ारे देखते हैं, ये इंटरनेशनल व्यूज़ आपके सामने आप देख सकते हो, ये चांद का नज़ारा। और हमारे कैमरामैन कुशल आप तक ये पूरे नज़ारे लेके आ रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन सर मैच के बारे में बात करें तो मुकाबला काफ़ी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि हम कह रहे थे कि अब ये 70 हो चुके हैं, मैच इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बल्लेबाजों ने कहा कि हम नहीं रुकने वाले, क्योंकि शहाद की बात करें, अमीश की बात करें, दोनों ने 10-10 का योगदान दिया है, अभी भी वो डटे हुए हैं। और अभी भी अगर बात करें तो आखिरी 3 ओवर में, यानी 18 गेंदों में रन चाहिए 37, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 12 के आसपास है। और आज बल्लेबाजों ने जैसे बल्लेबाजी की है सर, मैंने भी कल मुकाबले देखे थे, रन ज़्यादा नहीं हो रहे थे, लेकिन आज देखिए, आज सामने भले ही पहला मैच है, पहला मुकाबला खेल रही है दोनों टीमें, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल वो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जब आपके सामने बड़ा स्कोर होता है तो आप पहले ही उस स्कोर को देख के पहले ही मान लेते हो कि भाई ये होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजों ने कहा कि हमने विकेट जरूर खोया है, लेकिन हम मैच नहीं छोड़ने वाले, और यही होता है। और हम हमेशा कहते हैं कि अब 71 को चेस करना है, मुकाबले में जान डाल दी है। और अत्ता जिस प्रकार से 1 ओवर में 11 रन इन्होंने खर्च किए, तो उनको भी यहाँ से अब क्या वो स्ट्रेटजी रहेगी, यहाँ पे ध्यान होगा। लेकिन सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का हम फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं एसीएल की इस टूर्नामेंट में। गेंदबाजी में परिवर्तन, जर्सी नंबर मोहसिन बाबू जर्सी नंबर 8 अब गेंदबाजी के मोर्चे पे आएंगे। अभी भी 18 गेंदों में 37 की जरूरत। शहाद और अमीश ये दोनों बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर। मैच को थोड़ा सा जल्दी कीजिए, फास्ट अप कीजिए, क्योंकि टाइम को भी बंदे नजर रखा जाएगा। ये पहला मुकाबला है आज के दिन का, इसके बाद 3 मुकाबले अभी भी आने बाकी है। गेंदबाज तैयार, मोहसिन बाबू की पहली गेंद, इस बार कवर को भेजना चाह रहे थे, लेकिन फील्डर वहां पे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक गेंद वहां से फील्ड होके आए, दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला। अमीश जा पहुंचे 11 पे, ओवर नंबर 4 बीच मैदान के अंदर, 35 पे 1 विकेट। एशियन क्रिकेट लीग का ये पहला दिन, पहले दिन में ये पहला मुकाबला। बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे आ रहे हैं और उन्होंने कहा यस ये मेरा विकेट है। विकेट नंबर दूसरा आता हुआ, और डीजे बजता हुआ, डीजे की ओर भी जाएंगे, लेकिन हम रिप्ले में ही इंजॉय करेंगे डीजे। ओवर नंबर 4 बीच मैदान के अंदर आप देख रहे हो एशियन क्रिकेट लीग डायनामिक क्रिकेट ग्राउंड से जैसल सर और उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हम पे भरोसा जताया और यहाँ पे कतर में यहाँ पे लाइव करने का जो मौका दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू सर। मैच की ओर बढ़ेंगे। मोहसिन पहला विकेट इन्होंने जरूर लिया अपनी पहली ओवर में। दूसरी गेंद पे मोहसिन टुजार बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकले और ये गेंद काफी दूर स्टैंड में, और ये देखिए यहां में हमारे दर्शक कह रहे हैं कि मैं एक हाथ से कैच लेना चाह रहा हूं। 100 रियल्स की बात थी, लेकिन क्या वो एक हाथ से लपका गया? नहीं, ये रिप्ले में देखेंगे, ये रिप्ले में आपको देखने को मिलेगा। ओह नहीं, कैच पकड़ा ही नहीं गया था, कैच छूटा था।
हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक हाथ से कैच लेंगे तो भी आपको इनाम है, आप 2 हाथ से कैच लेंगे तो आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, ये ध्यान रखें। A toss is going on here for the next match between Techno Media and KRCC, Riaz and Zulfan Salim. Another single there, and to the toss here, Riaz is going to spin the coin, and Zulfan Salim, Techno Media captain, is going to call. You can spin the coin. Zulfan, what's your call? Heads was the call, and it's tail. Riaz, you won the toss. What would you like to choose? We will bat first. He's going to bat first. All the best to Zulfan for another game. News from the center is KRCC captain Mr. Riaz is winning the toss, elected to bat first again for the next match. Over to this one. Chirag. थैंक यू सर। मैच की ओर बढ़ेंगे। 42 पे 2 विकेट। अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक, गेंद हवा में जरूर है, विकेट आना चाहिए और विकेट बैक टू बैक ये विकेट आ रहे हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार से विकेट गए, स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड में लगे थे 42 रन और अभी भी आने वाले 13 गेंदों में रन चाहिए 29। ये देखिए रिप्ले में देखिए, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे, कोई गलती नहीं की फील्डर ने और विकेट आता हुआ और डीजे बचता हुआ। तीन विकेट के नुकसान पे अभी भी जो रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो रिक्वायर्ड रन रेट लगभग अब 14.50 का है। 29 चाहिए आने वाली 12 गेंदों में। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ फैजल सर बैठे हैं, वो पूरी तरह से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से मेहनत उन्होंने ली है, काफ़ी बड़ी मेहनत ली है। सिर्फ ये आज की मेहनत नहीं है, पिछले 1-2 महीने से वो जयसल सर हमारे साथ हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पूरी टूर्नामेंट को बड़े बनाने में कहीं पे भी हम जैसे हमारे साथ उनका कांटेक्ट हुआ था तब से आज तक मुझे लगता है कल रात भी हमारे साथ थे और पूरी तरह से कहीं पे भी कमी ना रहे इसकी उन्होंने पूरी छानबीन की। आखिरी तक उन्होंने कहा कि मैं इस टूर्नामेंट में कोई भी गलती नहीं चाहता हूं और वो पूरी तरह से डेडिकेट कर रहे हैं पूरी टूर्नामेंट को और एसीएल को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाने में उनका और उनकी पूरी टीम का, टेक्नो मीडिया की टीम का बहुत बड़ा योगदान है और उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। मैच अभी भी बहुत ही अच्छी स्थितियों में, अभी भी 12 गेंदों में 29 चाहिए, लेकिन ये जो डायनामिक स्पोर्ट्स का जो ग्राउंड है वो इतने रन देता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये 12-29 ये बहुत अलग मुकाबला होने वाला है। ये पहला मुकाबला है तो पहले मुकाबले में हम देखना चाहेंगे कि ब्लैक कैप्स क्या इस मुकाबले को अपने पा और खींचेगी। गेंदबाजी में परिवर्तन, Yes, swing and a miss. Another 2 was wide. The first one I take is into his second over. Have job in their hand. It's not going to be easy now. सर अभी भी 11 गेंदे, जिस प्रकार से ये गेंदों की बात की जाए तो गेंद अच्छी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद देखिए सर, आपने अभी भी देखा होगा पहले ओवर में भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। इस ओवर में विकेट आता हुआ और डीजे बजता हुआ। रिप्ले की ओर चलेंगे लेकिन पहले डीजे को तो बजाना चाहेंगे क्योंकि म्यूजिक बजेगा तो हमारे दर्शक काफी इंजॉय करेंगे और इंजॉय करेंगे इस पूरी टूर्नामेंट को। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, छेड़खानी, विकेट आता हुआ और हमारी अगर दाहिनी तरफ आप देखें काफी सारी फैमिलीज यहाँ पे एंजॉय कर रही है पूरी तरह से। और ये देखिए हमारे दर्शक, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो स्टैंड बनाया गया है, जो टेक्नो मीडिया का स्टैंड है, वहाँ पे काफी सारे जो इनाम दिए गए। जो हम इनामों की बात करें, पहले 150 एंट्री के लिए जो वहाँ पे लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, पहले 2 मैच के बाद जो पहला लकी ड्रॉ निकाला जाएगा उसमें से एक भाग्यवान विजेता को एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा और जब आखिरी मैच खत्म होगा तब एक ड्रॉ निकाला जाएगा, उसमें से एक लकी जो भाग्यवान विजेता होंगे उन्हें गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। एक हाथ से कैच 100 रियाल्स और 2 हाथ से कैच आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। तो कहीं पे भी जाए आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है ही है। टेक्नो मीडिया ने यही कहा है कि भाई आए हो ना तो कुछ लेके जाओ।
Superb, Chirag. It's all good. It's a terrific atmosphere here in Dynamic Sports Ground. Look at the crowd who comes in very good numbers. Moving on, a take. Good looking shot. He finds the fielder there and very keen to come back for the second, and good running between the wickets under pressure. They need some runs here. They need to convert those ones into twos. That's what exactly they're doing. There's a gift voucher for the man of the match, brought to you by New Man Saloon and Food Cart Restaurant as well. So man of the match will get a lot of prizes. 45 रन 4 विकेट। इस बार ये दांडी गुल, ये हम हमेशा कहते हैं यू मिस मी आई डेफिनेटली हिट यू, गेंद अंदर और दंडी बाहर। ये सतीक यॉर्कर है, ये देखिए रिप्ले में देखिए जिस प्रकार से बल्लेबाज का स्टांस था वो काफी अच्छे खड़े थे, लेकिन अतीक ने कहा कि ये सतीक यॉर्कर है। ये देखिए अतीक का सतीक यॉर्कर, जिस प्रकार से गेंद घूमी है, जिस प्रकार से गेंद ने अपना कांटा बदला है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। सलमान आए और सलमान चले गए। सलमान ने अपनी टीम के लिए 2 रनों का योगदान दिया। आप स्क्रीन पे उनका योगदान देख सकते हो। जाएंगे डीजे की ओर, फिर आएंगे मैदान की ओर। पैंतालीस रन और आधी टीम लौट चुकी है पवेलियन। सर सर मैं यही कह रहा था कि आपके पास विकेट अगर होते हैं तो फिर आप मनचाहे स्ट्रोक खेल सकते हो, लेकिन जब आपके पास विकेट ना हो तो फिर थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है। अल्ताफ द न्यू मैन इन, और अभी भी 9 गेंदों में रन चाहिए 26। 9 बॉल्स रिमेनिंग, 26 रन रिक्वायर्ड टू विन द मैच। वो हो क्या तेज तरार गेंदबाजी है। बल्लेबाज को क्या गेंद दिखी ही नहीं, इतने जोर से उन्होंने गेंदबाजी की है। और देखिए सर इनकी अगर बात की जाए, अतिक के हम फैन हो चुके हैं क्योंकि सारी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करने की कोशिश उन्होंने लगातार की है। और अब तक इनकी अगर गेंदबाजी का एनालिसिस देखें, 10 गेंदों में 12 रन और 3 विकेट महत्वपूर्ण लिए हैं। अतिक ने तारीफ करेंगे, इनकी तारीफ करनी होगी इनकी। अच्छी गेंद, अंपायर के पास अपील जरूर लाउड कर रहे हैं, लेकिन अपील में उतना दम नहीं। ओवर नंबर 5 चलता हुआ स्कोर कार्ड की बात की जाए, 45 रन 5 विकेट। लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर, 7 गेंदे, रन चाहिए 26। आखिरी गेंद फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में, ओवर समाप्त होता हुआ। क्या तारीफ करे इस गेंदबाज की, 12 रन दिए, 3 विकेट। और ये कंजूस वाली गेंदबाजी है सर, क्योंकि अतीक ने 6 के औसत से गेंदबाजी की है, पूरी तरह से मैच को पलट दिया है। ये मैच बदलने वाला ओवर था सर। Absolutely, as a turning point in this game, an absolutely brilliant performance with the ball from Atik. Has conceded, well, taken 3 wickets in the very first game. That exactly they need this big match player like Atik to come back very strongly. Irfan has trusted the ability on this main weapon he has in his bowling lineup. It's 26 is very, very tough to get from the remaining 6 deliveries. Never say anything in cricket. There's absolutely no wind now. There was a wind flowing towards the commentary box, the fine leg region. As in quiet atmosphere here, they need to play really well. इसके बाद जो मुकाबला होगा वो भी काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस मैदान में जिनके बल्लेबाजी का जलवा हमने बहुत बार देखा है वो बल्लेबाज इन एक्शन होंगे। लेकिन अब गुल आखिरी ओवर लेके, गेंद है 6, रन चाहिए 26। और ये अच्छा मुकाबला है, ये अच्छा टूर्नामेंट है। और जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट की बात की जा रही है, ये कतर का एक वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तैयारियां की है, तैयारी को अंजाम दिया है, तारीफ करनी होगी पूरी टीम की। इस बार गेंद हवा में जरूर थी, नो मैंस लैंड में जरूर गिरी है। पहला रन तेजी के बाद आगे, दूसरे की कोशिश और 2 रन पूरे। 1 को 2 में कन्वर्ट करना चाहिए। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आने वाली 5 गेंदों में रन चाहिए 24।
5 गेंदे 24 रन, बड़े 4 हिट इस मैच को बदल सकते हैं सर जी। और मेरे हिसाब से हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट में कोई भी भविष्यवाणी नहीं होती है, क्रिकेट में हमने हमेशा कहता है कि पलक झपकती ही परिस्थितियां बदल जाती है। तो ये बड़े 4 स्ट्रोक की तलाश, गुल फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए, फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकले, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, वो वहां पे थोड़ा सा फंबल होते हुए, लेकिन 1 रन को 2 में कन्वर्ट होना चाहिए और 2 रन मिलेंगे। अब इक्वेशन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आसान नहीं होगा, क्योंकि आखिरी 4 गेंदों का खिलाना बाकी है। अतीक वहां पे थे, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ उनके हाथों से, और क्या उन्हें वहां पे कुछ चोटिल हुए वो देखना होगा। यस, फील्डर को बदला जा रहा है या यस थोड़ा सा वहां पे मैच रुका हुआ है। They still need 22 from the remaining 4. Can't say anything now. That's two big shots can turn this game. For Black Hat, they are in the hunt now. Here we go, goal. Swing and a miss. A much needed dot ball. It could be a match turning point. A moment with that dot ball. A golden one. 49 for 5. 3 deliveries remaining. 22 runs to win. Shot is definitely won. There is protection long on. Bit of fumble. Test take a single. Technically, it's not possible now. 50 runs for Black Cats. Isn't it too late, Chirag? सर काफी दूर निकल गया अब ये मैच, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट की भी बात की जाए, 2 गेंदों में 21 रन, अनऑफिशियल डिलीवरीज मैच को बदल सकती है। लेकिन क्या गेंदबाजी है, लाजवाब गेंदबाजी गुल की। और ये अभी भी बल्लेबाज कह रहे हैं कि भाई मेरा नंबर कब आएगा वो ये कह रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी गेंद आनी होगी, लास्ट बॉल ऑफ द सेकेंड इनिंग। और ब्लैक कैट अब इस मुकाबले से काफी कोसों दूर, क्योंकि आखिरी गेंद में चाहिए 21 रन। लास्ट बॉल, इस बार गेंद हवा में जरूर है, गेंद को देखते रह गए और गेंद ने कहा टाटा बाय बाय। गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। 50 का आंकड़ा पूरा जरूर किया, लेकिन 16 रनों के साथ सीसीआरसी वॉरियर्स ने इस मुकाबले को जीता। और जो कप्तान का भरोसा था सर, जो 70 के आसपास जाने का, वो भरोसा बल्लेबाजों ने पूरा किया। और इसी तरह से पहला मुकाबला इस एसीएल का सीसीआरसी वॉरियर्स ने जीता है 16 रनों से। सर ये अगला मुकाबला है, अगले मुकाबले की भी ओर जाने वाला है। टेक्नो मीडिया वर्सेस KRCC, क्या सीसी, ये दोनों टीमें हैं। और हम टेक्नो मीडिया की बात करें तो वही वो बल्लेबाज है, घातक बल्लेबाज, जिनकी बल्लेबाजी हमने देखी थी कल के दिन में, और टेक्नो मीडिया को वो लीड करने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी हम देखने वाले हैं। All right, Chirag, thank you. So moving on to the announcement of the man of the match in the first game of ACL Season 2, brought to you by Techno Media between Black Cat and CCRC Warriors. Khalid Patan started off really well, 44 from 20, 5 boundaries and 2 sixes. Salim Gul was there with him, and Irfan and Fairuz, 2 other batters. They managed to get 70. It is a huge score, and Black Cat just not able to perform and get those runs. They lost with 14 runs, and we'll have to announce the man of the match. Terrific innings from the Patan. Our friend, he played really well, 44, and he is the man of the match from the first game. Khalid Patan from CCRC Warriors, man of the match of game number 1, Occasion Cricket League Season 2. He'll be getting so many prizes. I'm going to announce the prizes which he's going to grab for the man of the match. आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमने जो आपसे बात की थी कि जो 150 जो दर्शक आएंगे, उन 150 दर्शकों को यहाँ पे कूपन्स दिया जाएगा, और उनमें से एक भाग्यवान विजेता को एक गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। और आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो, वो वैगन व्हील अब घूमने वाला है। जो नंबर आएगा, उस नंबर के भाग्यवान विजेता को एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाने वाला है। और उस गिफ्ट हैम्पर के विजेता कौन होंगे, ये हम जरूर देखना चाहेंगे। सो वी आर गो। तो ये वैगन व्हील घूम रहा है, जो नंबर आएगा वो भाग्यवान विजेता को मिलेगा यहां पे ये प्राइज। एंड नंबर इज 47 नंबर जिसके पास है वो भाग्यवान विजेता आ जाए और अपने गिफ्ट हैम्पर को यहां पे लेके जाए। आपको अपना कूपन दिखाना होगा पहले तो,
जिसका कूपन होगा वो हमारे सामने है, मेन स्टेज के सामने आपको आना है, कमेंट्री बॉक्स के सामने, वहां पे आपको वो प्राइस दिया जाएगा। 47 नंबर 47, जो भी दर्शक है वो आ जाए जल्दी, उनको यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। ACL 2 में कुछ अलग करने की कोशिश हमारे सारी टीमों की, और हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनको जितना धन्यवाद कहे उतना कम है। जिस प्रकार से इन्होंने टूर्नामेंट को बड़ा बनाया, That's a lucky number for you guys. You can come and collect your gift hamper. As moving on to the man of the match announcement, Khalid Patans. Again, he was sensational with that 44 runs, 5 boundaries and 2 sixes. Man of the match, he'll be getting so many prizes. New Man Saloon, Food Cart Restaurant and Artifacts Printing and Gifts. Artifacts Printing and Gifts. He'll be getting gift hampers from all these 3 sponsors. Repeat, New Man Saloon, Food Cart Restaurant and Artifacts Printing and Gifts is going to give away gift hampers to man of the match. Khalid Pathan, a sensational innings, 44 runs, almost got his 50 in the first game of ACL. KRCC is winning convincingly against Black Cat, and we are moving to the game number 2 between KRCC and Technomedia. Earlier, KRCC captain Riaz had won the toss and elected to bat first. Surprisingly, all the captains who won the toss electing to bat first. Giving away the gift vouchers. The first one by New Man Saloon. For the man of the match, Khalid Pathan is receiving the gift voucher from New Man Saloon. Right after that, Food Cart Restaurant is giving away the gift voucher. And Artifacts Printing and Gifts as well, giving away 3 gift vouchers for the man of the match. Khalid Pathan grabbing all those 3 prizes. Brilliant performance with the bat. 44, 5 boundaries and 2 sixes. And Mr. Habib Koya is a lucky winner. Coupon number 47 is coming and collecting his prize right here near to the commentary box as well. The first lucky winner of ACL goes to coupon number 47, Mr. Habib Koya. Congratulations, man. And moving to the next match. Can't wait to see that Zulfan Salim arrives one more time to Dynamic Sports Ground. Is taking on KRCC within few minutes from now. We'll be back very, very soon after a short break.
have a photo session with all the captains of ACL. Please be here. Out to the next match. Two opening batters of Cassis. Ifzal Khan right there, the non-strikers end. Just finished a fantastic tournament. He was runners-up yesterday. And over to the bowling department. Straight away good placement, but just managed to get a safe hand of the fielder in the edge of the circle, short man. It's a good contest between two strong teams. KRCC taking on Technomedia. Earlier, Riaz, the captain of KRCC, is winning the toss, and again, one more captain has decided to bat first in Dynamic Sports Ground. It's a completely different game today compared to what we saw in the last tournament. All the captains have decided to bat first. That's Ifzal, just not enough power. Zulfan Salim as at the backward point. Two big players in this game. Ifzal with the bat. On the other side, the captain of Technomedia, Zulfan Salim. A lot of supporters here for these two guys. Very, very popular cricketers in Qatar. Zulfan Salim and Ifzal Bhai. That's what he does, just flick towards it, short fine leg, taking a single, brings back his partner to strike. At Technomedia, strikers are fielding first against KRCC. Game number 2 of ACL Asian Cricket League, brought to you by Premier Technomedia, supported by Just Us and Auto. First over in progress, game number 2. We are live here and YouTube worldwide. If you're watching anywhere from the world, this is Dynamic Sports Grounds, brings you the best cricket actions, setting up a high standard. Moving on. Oh, it should have been a little late to react to that. Zulfan Salim, it's fielding that covers position, allowed the batter to go for the single. Another anchor role is due from this big man, Ifzal Khan. Back of the line, this played towards the backward point. 3 field there, so it's a packed offside field. And the power play. KRCC had won the toss early and elected to bat first. In the first match, we had around 70 runs, which was not able to chase. As we know, the past score in the Dynamic Sports Ground, around 60 runs. Anything more than 60 is very, very tough to chase here. So what exactly happened in the first game? Big shot!
played that really well. Aerial launched in style through the mid wicket, clearing the boundary of 6 number 1. What a good shot. He was in a good position when he played. 1 over completed, 10 runs on the board. KRCC, exactly the captain wanted to get a flying start. Played like a baseball, and look at the follow through. An absolutely good position when he played that towards that mid wicket region. 2 opening batters got the best in the business. Ifzal Khan is one of the key player in the side of KRCC. On the other side, you have the man with plenty of power. He was the man of the series, leading run getter in this last tournament. Just happened last evening. Zulfan Salim was too good. He is in good touch. He is going to come back and continue his from where he stopped in the last evening. Zulfan Salim, there are a lot of supporters here for this man. 2 big players in these 2 teams, KRCC and Techno Media. After the power play, 10 runs on the board. Headshot thus headed off with the wide. So after the power play, 10 runs conceded in the first over and 6 legal deliveries left in this. So Khalid and Ifzal, 2 opening batters for KRCC. What a good shot, back of the length. Ifzal Khan, tall man, back foot shot towards the long off. Just going for a single. He knows what exactly he's doing. His role is very simple. He needs to play throughout this innings. Quite capable. A very good opening batter, Ifzal Khan. Placement towards the back foot point. Zulfan Salim, rid of fumble, allowed the batter to go for a single. That's all happening here in Dynamic Sports Ground. What a terrific atmosphere to bring the best when it comes to the cricket tournament. Techno Media, a lot of innovations in this tournament. But third umpire decision, we are live in YouTube as well. Swing and a miss. It's a good comeback, right on the money. Irshad using his experience, bowling to Ifzal. Wanted to go for a drive towards that long on region, meets completely. It's a dot ball. So KRCC 13-4 no loss. Shot is on again towards that long off region. Protection there, just a single. Played really well. This protection tip mid wicket to score like the 2 fielders. So Hassan Pathan, tall man. This is going to be interesting. He is bowling to his teammate, his good friend Ifzal Khan. Very interesting contest between bat and ball. Hassan Pathan to Ifzal. And he played that really well. What a good shot. It's sailing towards that mid wicket, launched in style, punished by the big man. Back foot, and again he was in a good position when he played that. An absolutely sensational hit. Ifzal Khan once again playing a genuine innings. Dynamic Sports Ground. We watched him in the last tournament. Was too good. One of the leading run getter in Sanskriti Premier League. Now is coming back to here. One more tournament, ACL. The score at this moment, 21 for no loss. After the completion
of the first two striking at the rate of 10 runs per over. Chirag, it's not a bad start for KRCC after winning the toss. Again, another captain elected to bat first, and there is absolutely no wind flowing anywhere. जरूर से जिस प्रकार से ये स्टार्ट हुई और खास करके इफ्जल भाई जिनको काफी देर के बाद हम देख रहे हैं 2 ओवर 21 रन और अभी भी अगर बात करें 7 गेंदों में 10 पे खेल रहे इफ्जल और खालिद की बात की जाए 5 गेंदे 10 रन. द न्यू बॉलर इन 2 ओवर की समाप्ति 21 रन. ओवर नंबर तीसरा और देखिए तीसरे ओवर की शुरुआत किस प्रकार से होगी. सजीर गेंदबाजी के मोर्चे पे आएंगे और उनके सामने होंगे बल्लेबाज खालिद जिन्होंने 5 गेंदे खेली है. 10 रन अपनी टीम के लिए अब तक बनाए हैं. साजिर लेफ्ट ऑफ राउंड विकेट. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी. इस गेंद को खेलना चाह रहे थे. जिस प्रकार से गेंद ने काटा बदला और फील्डर ने जब तक गेंद को उठाया पॉइंट से और जब तक फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन यहां पे जरूर पूरे किए. स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड की बात करें तो स्कोर कार्ड पर लगे 23 रन. इफ्जल भाई की बात करें तो कल के दिन में फाइनल की मैच को खेला था उन्होंने. रनर अप रही थी उनकी टीम और आज मुकाबला खेल रहे दूसरा इस टूर्नामेंट का दूसरा और अपनी टीम का पहला मुकाबला केआरसी. साजिर टू खालिद. ओवर नंबर 3. इस बार अच्छी गेंद थी ऑप्शन के बाहर. फील्डिंग वहां पे अच्छी हुई है. डायरेक्ट हिट जरूर फर्नीचर को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, थोड़ा सा तकलीफ में डाल सकती थी बल्लेबाज इफ्जल को, लेकिन इफ्जल काफी जिस प्रकार से उनकी पर्सनालिटी है काफी आसानी के साथ पहुंच गए. स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड पे लेंगे 24 रन. आप ऑन स्क्रीन उन्हें देख सकते हैं जिस प्रकार से ये खेलते हैं. एक अलग अंदाज है इनका जब ये खेलते हैं और गॉगल्स पहन के ये हमेशा खेलते हैं. मैंने 2016 के साथ उनको देखा था जब पहले बार मैं हनान प्रीमियर लीग में आया था. कादर भाई उनको धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने मुझे मौका दिया. द फर्स्ट इंडियन कॉमेंटेटर हु फ्लाई फॉर कतर. इस बार गेंद काफी बाहर है. यस, अंपायर ने कहा यह खराब गेंद है. कादर भाई को हम कभी नहीं भूलते हैं क्योंकि जिस प्रकार से पूरे हमारी लाइव बनाने में जिनका अहम रोल है, क्योंकि 2017 में मैं मेरे मिसेस के साथ यहाँ पे आया था और उसका भी श्रेय कादर भाई को ही जाएगा क्योंकि जिन्होंने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, हमेशा ही सपोर्टिव रहे हमारे लिए. साजिर चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, यहाँ पे खतरा हो सकता है. रन आउट का मौका और बल्लेबाज को कहना होगा टाटा बाय बाय. क्या यहाँ पे गलती हुई थी? दोनों बल्लेबाजों में कोई कम्युनिकेशन नहीं था. इफ्जल ने स्ट्रोक खेलने के बाद वो थोड़ा सा लेजी थे, वो नहीं चाह रहे थे कि वहां पे रन होगा, लेकिन सामने वाले खाली थोड़ा सा वो जल्दी में लग रहे थे और कोई गलती नहीं की. विकेट आता हुआ और डीजे बजता हुआ विकेट गया है. विकेट नंबर आता हुआ ये पहला, 25 पे लगता हुआ ये पहला झटका. और डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे. था और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन अच्छी शुरुआत के बावजूद एक विकेट जो मिसकम्युनिकेशन की वजह से देखने को मिला. साजिर अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी. बल्लेबाज को पूरी तरह से उन्होंने पढ़ा है कि बल्लेबाज क्या करना चाह रहा है. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहा है, थोड़ा सा एंगल बनाने की कोशिश और लगातार अच्छी टिप्पे पे गेंदबाजी हो रही है. सर अच्छी गेंदबाजी अब तक.
Very well going after having someone like Ifzal Khan right in the front is playing an anchor role for sure for this team. It just stopped. It started off really well in this tournament as well. He was too good in the last tournament. Ifzal Khan swing and a miss. It's a very good line in length. Skipping that in the right area in this 23-yard pitch in Dynamic Sports Ground. The bowlers will come to the party. Yes, we saw the captains have decided to bat first as soon as they won the toss in the first two games. Would be looking around 65 to 70, which is more than the past score in this ground. Anything more than 60 will be very, very tough to chase under the lights in Dynamic Sports Ground. हमने पहले मुकाबले में भी देखा था, जब पहले बल्लेबाजी की गई तो 70 रन बने थे, लेकिन जब चेस करने की बात आई तो वो रन चेस नहीं हो पाए. तो यही साबित होता हुआ कि आप अगर पहले जो प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता है, वो प्रेशर के बाद आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आप काफी अच्छे रन बना सकते हो. लेकिन जब आप रन को चेस कर रहे हो तो फिर वो प्रेशर आपके ऊपर रहेगा. और कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने भी वो प्रेशर बनाए रखा और पहले मुकाबले को जीता था पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने. यहाँ पे हम केआरसी की बात करें तो उनकी शुरुआत भी काफी अच्छी थी. 2 ओवर में 21 रन थे, इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए. इसका मतलब है कि अब गेंदबाजों ने कहा कि हम भी इस मुकाबले को आसानी के साथ छोड़ने वाले नहीं. उन्होंने यहाँ पे जरूर वापसी की है. सिलदार सर. Absolutely, the game plan is very simple for the fielding team. They saw the first game, anything more than 60 was tough to chase. Now they would like to restrict the opposition team for less than 55 runs or maximum 60. That's but as long as this man is there in the middle, Ifzal Khan, anything is possible. He is looking good, is in good touch, and you can see some fireworks from this big man. Over to the next over after the completion of 3, 26 for 1. Ifzal Khan 11 from 9. Zishan just joined there in the middle. Jawad to start this new over number 4. जवाद की पहली गेंद ऑप्शन के बाहर थी, उस गेंद को खेलना चाह रहे थे ऑन साइड के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं. डॉट गेंद आती हुई, बिंदी गेंद आती हुई. स्कोर कार्ड की बात की जाए 26 रन. जब भी इस मैदान की बात की जाए, डायनामिक का ये मैदान, मुझे लगता है हनान प्रीमियर लीग ने इस मैदान को एक बड़े पैमाने में, क्योंकि हमने सारे टेनिस क्रिकेट के स्टार इसी मैदान पे देखे, लेकिन इस बार देखिए थोड़ा सा उछाल, लेकिन गेंद बाहर है और अंपायर ने कहा ये खराब गेंद है. वाइट के साथ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जरूर मिलेगा. स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पे. लॉन्ग मैन, हम हमेशा कहते हैं जब ऊंचे कद की खिलाड़ी है और बड़े स्ट्रोक में ज्यादा विश्वास रखते हैं इफ्जल भाई, वो देखना किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे. इस बार गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं. फिर से एक डॉट गेंद, बिंदी गेंद आती हुई. जवाद की बात करें, थोड़ा सा ऑप्शन के बाहर रख रहे हैं, बल्लेबाज के रीच में नहीं गेंद दे रहे और अच्छी गेंदबाजी. जवाद अच्छी वापसी करते हुए. और अब जिशान और इफ्जल ने अपने दोनों ने अपने साथ बातचीत कर ली है कि क्या आप ऑप्शन के बाहर वाली गेंद को खेल रहे हैं, आपको थोड़ा सा देखना होगा, गेंद पे आना होगा, क्योंकि आपको आपके ऑप्शन का पता होना चाहिए. यही कुछ बातें जिशान ने की होगी. इफ्जल फिर से तैयार. इस बार चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, पूरी तरह से बल्लेबाज को ये नचा रहे. गेंदबाज की तारीफ करें. एक शो आ रहा था, हमने इंडियन टेलीविजन में देखा, नच बलिए, और यहाँ पे थोड़ा सा बल्लेबाज को घुमा रहे हैं, बल्लेबाज को एक ही जगह पे खड़े कर रहे हैं. गेंदबाज जवाब, लाजवाब गेंदबाजी. अच्छी गेंद, क्या तारीफ करे. व्हाट अ बॉलिंग. ये होता है, ये देखिए आपके पास मिश्रण होने चाहिए, खास करके आप जब टेनिस क्रिकेट खेल रहे हो. टेनिस क्रिकेट में आप एक ही टिप्पे पे गेंदबाजी नहीं कर पाते हो, तो फिर आपके पास वो मिश्रण होने चाहिए, वही दिखाते हुए जवाब. इस बार फिर से व्हाट अ बॉलिंग. क्योंकि इफ्जल भाई को शांत रखना इतना आसान नहीं है सर जी, और एक बड़ा कॉन्फिडेंस है इनके पास. काफी बड़े नामचीन खिलाड़ी हैं और आज वो पूरी तरह से चारों खाने जीत है. व्हाट अ बॉलिंग. इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला. 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए ओवर नंबर 4 यहाँ पे समाप्त हुए. सर अगर हम 2 ओवर की पिछली बात की जाए, पिछले 2 ओवर में रन आए सिर्फ 6, तो ये कहीं ना कहीं बल्लेबाजी वाली टीम को सोचना होगा कि हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं सर जी. Absolutely, what an over it was from Jawad. Jabbo is having a reputation of one of the best all-rounder in Qatar when it plays to tennis ball. Has also come from
the state of Kerala. Trivandrum Jawad has done some damage to the opposition team. What he does is really well, and what he did, he kept Ifzal Khan very, very quiet. Just 2 runs conceded, 4 dots in that over. Unbelievable over. Under circumstances, there is a perfectly executed over. It's pretty much they are back in this game. Now they need to play really well to get some runs on the board. 4 overs have been bowled, just 28. Last over considered just 2 runs. Now Ifzal Khan has to change the gear. He needs to go full swing. And absolutely no chance for him to settle down. And to the bowlers, and it's going to be Sajid Jari. Signal from the umpire, it's a wide. Yes, it was pretty much outside the off stump. Ifzal has had 4 dots in the last over. Now needs to make up for that. I'm sure he's going to play big shots. Quite capable, tall man. There's absolutely no room for error. He needs to play his best shots now. 12 from 15, 1-6 for Ifzal. Here we go. That's what he does. Thank you so much. Brit given. And he's deposited over the square leg region. A brilliant 6. He was very, very quiet in the last one, Chirag. But this time he said, thank you so much. The bowler has given a little bit of width and punished. सर हम हमेशा कहते हैं कि जब कोई भी शेर जब शांत होता है तो वो शांत नहीं रहता है, और जब वो दहाड़ता है तो ऐसे ही दहाड़ता है. क्या बल्लेबाजी है. फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश. फिर से गेंद को बड़े स्ट्रोक में खेलना चाह रहे थे, लेकिन 1 रन मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में आए, गेंद को उठाए. स्कोर कार्ड में अब थोड़े से बदलाव होते हुए स्कोर जा पहुंचा अब 36-36. पिछले 2 गेंदों में रन आए 7 और पिछले 12 गेंदों में रन आए 5. तो ये बदलाव है सर, ये होना चाहिए, क्योंकि दुनिया बदलाव ही मांगती है. आप अगर अपने आप को खुद को बदलाव नहीं करोगे, आप में चेंजेस नहीं करोगे, तो आप काफी पीछे रह जाते हो, और यही कुछ स्कोर बोर्ड में भी होता हुआ. इस बार फिर से लोअर फुल टॉस गेंद थी. गेंद ने बाहरी किनारा जरूर लिया. कीपर ने गेंद को फील्ड किया. कोई रन नहीं. स्कोर कार्ड पे लगे 36 रन. विकेट खोया 1. इफ्जल की बात की जाए 17 गेंदे 19 रन. और जीशान जिन्होंने 3 गेंदे अब तक खेले, कोई रन नहीं सर. ये अच्छी बात नहीं है टीम केआरसी के लिए, क्योंकि उनका बल्ला भी बोलना चाहिए, क्योंकि ओवर नंबर है ये 5. छोटी गेंद थी, लेकिन इस बार विकेट कीपर का सहारा मिला है और काम तमाम होता हुआ बल्लेबाज जीशान का. जीशान बैक टू द पवेलियन. कोई रन नहीं बना है और साजिर को मिलती हुई पहली सफलता इस 5वें ओवर में. देखिए ये रिप्ले में देखिए, ऑफ स्टंप की बाहर वाली गेंद, बाहरी किनारा और काफी बड़ा मोटा सिरा लेके ये कीपर के दस्तानों में गई है और विकेट आता हुआ. कीपर ने कोई गलती नहीं की. विकेट आता हुआ. डीजे बचता हुआ. Yes, all happening here in Dynamic Sports Ground. Ifzal Khan needs to play sensibly from now if they want to get some runs on the board. There's 2 runs coming in the last over. This over, Zishan is not able to contribute. Without scoring, he had to be back to the dugout. It's all up to Ifzal now. He needs to have one partner there in the other end to give him company right till end of this innings. 60 is the pass score. After winning the toss, they elected to bat first. What they need is 60-65 runs. It's looking very, very tough at this moment. 36 for 1 KRCC. इस बार गेंद हवा में है, कोई गलती नहीं. विकेट, बैक टू बैक विकेट. 2 चल में आया, बल्लेबाज आया और बल्लेबाज चला गया. जो जिस प्रकार से ये गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज साजिर को ये सफलता. देखिए ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकले और कोई गलती वहां पे की गई नहीं और विकेट आता हुआ. विकेट नंबर 2 आता हुआ और कहीं ना कहीं बल्लेबाज 3 ये विकेट था और साजिर को मिलती हुई और एक सफलता. विकेट. 5वां ओवर. 5वें ओवर की अभी भी अगर बात की जाए तो आखिरी गेंद आनी शेष होगी. 36 पे लगता हुआ ये 3रा झटका.
आखिरी गेंद इस पांचवें ओवर की 36। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, लेकिन बल्लेबाज इफ्जल नहीं चाह रहे कि वो आखिरी गेंद पे सिंगल ले। ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पे पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 36 रन। 3 विकेट के नुकसान पे हासिम जो आए थे बल्लेबाज वो आउट होके लौटे, और उसके बाद अब जो नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर आए उन्होंने एक गेंद खेली। 5 ओवर की समाप्ति, जब्बीर और इफ्जल ये दो बल्लेबाज आमने सामने, और अब 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे आखिरी 6 गेंदों का खिलाना बाकी। सर आपके पास जाना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, पहले 2 ओवर तक तो काफी अच्छा चल रहा था क्योंकि 21 रन बने थे, लेकिन पिछले 3 ओवर में रन आए सिर्फ 15 और विकेट खोए 3। An absolutely brilliant performance for the bowler, and they knew what exactly. It was good captaincy as well from Zulfan Salim. They have to restrict now is less than 50 runs unless Ifzal Khan goes for big lasty blows and becomes a real cameo towards the end. 36 for 3, 1 over to go. Last 2 overs, it was a nightmare for the batting team. Now Ifzal Khan has to do something very, very different here to get them some runs on the board now. Another 15 runs is quite possible. He can take some bad balls to punish over the mid wicket as one of the target areas in this ground. He would be looking for a big shots. Ifzal Khan. आखिरी 6 गेंदें। पहली गेंद फिर से पैरों पे करने की कोशिश, गेंद को जिस प्रकार से खेला, पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश होगी और क्या ये विकेट होने वाला है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे स्ट्राइक को बदला गया और ये 2 रन भी पूरे कर लिए। खराब फील्डिंग। देखिए जिस प्रकार से थ्रो था, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्नोमीडिया की टीम को सोचना होगा कि वो गलतियां, टेक्नोमीडिया स्ट्राइकर्स आपने अच्छी अब तक खेल दिखाया है, लेकिन एक गलती आपको मैच से थोड़ा सा पीछे लेके जाएगी और यही कुछ होता हुआ सर जी। Absolute fumble. Just allowed them to go for 2 runs from nowhere. इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, ये स्ट्राइक बदलने का मौका फायदा होता हुआ। ओहो ये कैच भी छूटा है। दर्शकों के लिए काफी सारे प्राइजेस है। एक हाथ से ले गए तो 100 रियाल से, और 2 हाथ से ले गए तो आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। लेकिन ये देखिए रिप्ले में, देखिए ये यहाँ पे छक्का जाने के बाद ये कैच होना चाहिए था। ये देखिए रिप्ले में ये दर्शक ये ले लिया था, एक हाथ से लेने की कोशिश और ये छूट गया। 100 रियाल्स के लिए गए थे, गिफ्ट हैम्पर के लिए भी जा सकते थे सर। Yes, almost got 100 riyals. Not even 50 riyals now. Exactly. Another fumble in the gallery. Moving on. अगली गेंद, ओहो ये तो है इफ्जल भाई और इनका बल्ला माशाल्लाह। और जब ये बल्लेबाजी करते हैं सर, यही है वो खिलाड़ी जिन्होंने, मुझे अभी भी याद है, मैं 2016 से इनको देख रहा हूं, इनमें कहीं भी कमी नहीं आई है। उनका बल्ला हमेशा ही बोलता है। और आज देखिए जब कंडीशंस खराब थी तो इन्होंने कहा कि मैं हूं ना, और क्या बल्लेबाजी हुई है, लाजवाब बल्लेबाजी। Absolutely. 50 runs for KRCC. फिर से अंदर की तरफ गेंद आई, इस बार गेंद को खेला, 1 रन की तलाश, दूसरे की कोशिश होगी और इफ्जल भाई कह रहे हैं भाई मैं ले लूंगा वो भी रन। 2 रन भी पूरे होंगे, तीसरे की कोशिश, 3 रन भी पूरे, और क्या चौथे की तरफ जाने वाले? यस, ये 4 रनों के लिए भी जाने की कोशिश करेंगे और इन्होंने कहा भाई मैं स्ट्राइक लूंगा। सर मैं इनके बारे में इतना ही पूछना चाहूंगा कि भाई आपके पास स्टेमिना आता कहां से इतना, क्योंकि एज इज ओनली नंबर। इनके बारे में यही कहूंगा कि पिछले बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और एक बेहतरीन खिलाड़ी है। कल भी इनसे जब बातचीत हुई थी, इन्होंने कहा था भाई बल्ला काफी अच्छा चल रहा है और टीम की हित में चल रहा है। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे।
Strong man. Yes, that's exactly Chirag was talking about. Ifzal Khan. Very confident, very confident. Lot of energy. Full on whenever he comes to play, and it's a treat to watch. Leading from the front, he knows what exactly his role is in the team. That's what exactly is one of the top end batter in this franchise. KRCC trusting on his ability. Now they've got so many runs, a bit of fumble there, allowed the batter to go for extra runs. They're getting runs in the final overs. ओहो क्या बल्लेबाजी है, लेकिन इस बार गेंद हवा में, विकेट। स्ट्रोक काफी अच्छा था, लेकिन वो हम कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूशन चाहिए था वो नहीं मिला। जिस प्रकार से दूरी मिली वो दूरी कम थी, और इसी कारण ये विकेट आता हुआ, विकेट नंबर 4, 53, लॉस ऑफ 4। लेकिन इफजल भाई ने उनका काम कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी की, 21 गेंदें इन्होंने खेली, 22 गेंदें और 36 रनों का योगदान, कहीं ना कहीं इनका बल्ले की वजह से ये बहुत कुछ होकर देखा। ये देखिए, आप दोहा का ट्रैफिक देख सकते हो, ये काफी सारे सीन्स आपको देखने को मिलते हुए। थैंक यू मनीष फॉर दिस वंडरफुल मूवमेंट्स। Kushal and Manish doing a wonderful job. Thank you all of you. हमारे अंपायर्स को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे सारे ऑफिशियल्स भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार मैचेस आपको देखने को मिलने वाले। हमारे ये जो स्ट्राइकर अंपायर है मंसूर सर, आप मंसूर सर को ऑन स्क्रीन देख सकते हो, वो स्ट्राइकर अंपायर की भूमिका में और मेन अंपायरिंग की भूमिका में नियाज सर, ये दोनों अंपायर काफी अच्छा काम निभाते हुए। कमेंट्री बॉक्स में शिलदार सर हमारे साथ हैं। उसके बाद हम पूरी अगर टीम की बात करें, हमारे डीजे, हमारे डिजिटल स्कोरर, ये सब काफी अच्छा काम करते हुए, और इसी कारण ये टूर्नामेंट एक अलग मोमेंट पे है। देशमुख, तलहा देशमुख, द न्यू मैन इन, देखना है क्या करेंगे। और अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद जरूर की थी, हेलीकॉप्टर को खेलना चाह रहे थे, पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश, फंबल। अब टेक्नो मीडिया को ये सोचना होगा कि भाई हमने रन जुटाए कहाँ है, कि हमने रन कहाँ पे दिए, और यहाँ पे ये 2 रन और विकेट मिलेगा। स्कोर कार्ड पे लगे 55 और 56 इज अ टारगेट, 56 रन। सर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये रन बनने वाले, क्योंकि पहले 2 ओवर की बात करें 21 रन थे, उसके बाद पूरी तरह से लगाव, हम कहें कि फुल स्टॉप लगा था स्कोर पे। लेकिन इफजल भाई का वो स्ट्राइक चेंज, उसके बाद लगाए उन्होंने 2 बड़े सिक्सर, और उसके बाद ये मैच में वापसी। 55 ऑन बोर्ड, 56 इज अ टारगेट। आप ये कमेंट्री बॉक्स में देख रहे हो, हमारे इस टूर्नामेंट के कर्ता करविता हम जिन्हें कहते हैं हमारे मराठी में, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में ये पूरे मैच को देख रहे हैं। जयसल सर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में, आप कमेंट्री बॉक्स का ये नज़ारा देख रहे हैं। हमारे साथ डिजिटल एडिटर तन्मय मेहर है, मैं खुद चिराग मेहर आपके साथ जुड़ा हूँ, और शैलजाद सर जो इंग्लिश कमेंटेटर है हमारे साथ, ये भी जुड़ चुके हैं, और उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। ये सारे कमेंट्री बॉक्स के नज़ारे आप तक लेके आते हुए हमारे कैमरामैन कुशल चौधरी, मैन फ्रॉम मुरबे, थैंक यू कुशल। और हमारे साथ दूसरे जो कैमरामैन है, कैमरामैन मनीष निजाई, मैन फ्रॉम विरार, ये भी अपना काम निभाते हुए। तन्मय मेहर को आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन एडिटर के रूप में, ये भी अपना काम निभा रहे हैं। जयसल सर को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हम पे भरोसा जताया है, और इस टूर्नामेंट में हमें जो इनविटेशन मिला उनकी तरफ से धन्यवाद। डीजे की ओर बढ़ेंगे, फिर से मैदान की ओर आएंगे। डीजे
He'll have the opening batters of Technomedia will be arriving very soon. I wouldn't be surprised if this Zulfan Salim once again is going to come and entertain all of us here. It's a packed, dynamic sports ground. Technomedia is setting up a real high standard when it comes to cricket tournament. The very first time, a lot of innovations in terms of conducting the tournament here. 20 franchises bringing the best players from all these countries, Asian countries, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal. Plenty of players, more than 500 players have registered in this big tournament as coming to a fantastic display of big tournaments. In the progress, the first day kicked off in style. We have 2 more matches to be completed this evening. Right now, you are watching live the Shreelive YouTube channel. We are live from Qatar Dynamic Sports Ground. It's going to be the chase now, Zulfan and his boys, to get 56 runs from the allotted 6 overs. We'll have to wait and see who is going to be his partner. Yes, he's arriving to the crease. Job in the hand for Ifzal, Riaz and KRCC team to defend this. What they would be looking to get rid of Zulfan Salim up front from the very first over. This is going to be the key to get his wicket. He was in a fantastic form in the last tournament. Happened the same ground. The SPL was the man of the series. He was a leading run getter. He is going to continue from where he stopped in the last evening. Zulfan Salim is going to be the key here. Has not enough runs on the board, just 56 to get. It's got the partner along with him. Sajjad Jari is a partner for Smegapar and Sajjad, along with Zulfan Salim, 2 opening batters. So all set to go. We're live here from Dynamic Sports Ground. 56 runs to win from 6 overs. Is going to strike first, as normally Zulfan is going to be in the non-striker's end. The last game, yes, that's what exactly he does. He's going to watch his partner playing the first few balls and he is going to take the control. It's too good when it comes to there's not enough runs on the board. Afzal Khan and his boys has to really marshal his troop and get a good defending here in terms of defending 56 runs as they managed to get a couple of big shots from Afzal Khan. We're cruising towards that pass score in the Dynamic Sports Ground, 60 runs, just not able to get through that pass 60. Just waiting who's going to be the striker now, Sajjad or Zulfan. Yes, here we go. Sajjad to face the first ball. On the other side, the fielding side, it's going to be Zishan to start the proceedings. And once again, reminding the spectators who are sitting in the gallery, you need to catch those flying balls with one hand. Couple of missed catches have been dropped down. When you can manage to get with one hand, you can come and get your 100 Real Qatar Rials gift voucher from the commentary box. So watch out. Sajjad, a right-hand batter, he would be targeting the square leg and mid-wicket. On the other side, Zulfan Salim is one of his favorite regions in this ground. It's the other side of the ground, which is deep extra cover. When he bats, it's going to be the deep extra cover and deep square leg for the left-hand batter. So all set to go, umpire. The ball number 1, 57 to win. Zishan
Charging in, first ball to Sajad. Straight away, a quick one, no signal from the umpire. Just came like a rocket, fast and furious. I need to get these dot balls up front to create some pressure to the batting team. Not enough runs in the board, probably less than 5 to 6 runs short. Swing and a miss again. It's a couple of very good deliveries up front. Right on the money, Zishan. Now they'll have a chat. Zulfan will have to come and talk to his partner. Try to get me a single. I need to find some or other way to connect. Terrific atmosphere. It was a wind blowing towards the fine leg when we started this tournament at 7:45 p.m. This time it's absolutely no wind. The batters have to go for big shots towards the long on and long off. Power play is on, just 3 players outside the 30-yard circle. The semi connects and does a fumble there, backward point. As racing towards the boundary, tough one for the fielder, stopped a few inches away from the boundary line. And they will take it. 2 runs added after a couple of dots to start this. .56 is the target. Just managed to get 2 runs from the first 3. Sajad 2 from 3. Zulfan yet to face his first ball. The first game of ACL season 2. Progressing here, match number 2. Here we go. Zishan charging in. Swing and a miss again. Beautifully done. Right on the money. Again, it's outside the off stump. Had absolutely no clue what he was doing. Very fast from Zishan. We saw yesterday Jabir Khan bowling in some speed. Terrific deliveries. And at this moment it's Zishan. Almost the same speed. The batters have no idea what they're doing. They're not able to see the ball at all. Connects, driven to the covers, protection there. Probably get a single. No, a bit of fumble allowed the batter to go for an extra run. They need to convert those ones into twos. I request 2 captains, OBG and Kovik CC. Please be here for the toss. Kovik CC captain, OBG, please be here for the toss for the next game. Back of the length, he played towards the long off region, will cut it off just for a single. So after the completion of the power play, it is just 5 runs on the board. It's 56 runs to win. They needed a big over to start with. Kovik CC and OBG captain, please be here for the toss, guys. I request 2 captains, OBG and Kovik CC. 2 captains, please be here for the toss. Yes, 2 captains, Ashraf Hassan Achuka and Prashant. Please be here for the toss. Prashant and Achuka, please be here.
Kovik CC is taking on OBGCC in the next game, game number 3 of the first day of Asian Cricket League Season 2. The first over coming back to this game, just 5 runs conceded. दूसरी ओवर की ये दूसरी गेंद, इस बार गेंद थोड़ा सा बाहर, अंपायर के संकेत वाइट। शाजी कुमार अब गेंदबाजी के लिए आते हुए। स्कोर कार्ड की बात की जाए 5 रन 6 रन, ओवर नंबर दूसरा, 56 रनों का लक्ष्य का पीछा, 29 रन 29 गेंदें अभी भी आनी शेष, 50 की जरूरत। जिस प्रकार से इफ्जल भाई ने बल्लेबाजी की थी उसी प्रकार की बल्लेबाजी अब यहां से करनी होगी सज्जाद और सुल्तान को। सज्जाद जिन्होंने 7 गेंदें खेली, फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश, इस बार फिर से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ज्यादा है, वाइड रन, लगातार 2 एक्स्ट्रा। शाजी कुमार काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है और इनके पास वो एक्सपीरियंस है, अनुभव काफी फूट फूट के भरा हुआ, लेकिन उस अनुभव का फायदा उठाना चाहेंगे शाजी कुमार। इस बार अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, इस बार गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। स्कोर कार्ड पे लगे 7 रन। टेक्नोमीडिया स्ट्राइकर्स के पास वो की प्लेयर है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो यहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है। सज्जाद, Prashant, please come for the toss immediately. Captain of OBGCC, Prashant, where are you? गेंद हवा में है, कैसे कि कैप्टन ने कहा कि विकेट चाहिए था और विकेट मिलता हुआ, और कहीं ना कहीं ये विकेट की तलाश थी। हम हमेशा कहते हैं जब प्रेशर बनता है, हम हमेशा कहते हैं जब प्रेशर बनता है तो माहौल बनता है, और माहौल था विकेट का, विकेट आता हुआ। और कहीं ना कहीं ये देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से गेंद ऊपर चली गई थी, कोई गलती नहीं की कैप्टन ने, और उन्होंने कहा ये सब सैंड है और अच्छा कैच। और रिएक्शन देखिए, वो रिएक्शन देख के मजा आया, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं आप जब मैच में होते हो आपके रिएक्शन काफी कुछ कहे जाते हैं, और वही रिएक्शंस आपको देखने को मिलता हुआ। सारे दर्शक जो ऑनलाइन इस मैच के मुकाबले को देख रहे हैं उन सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर अभी भी आपने श्रीलाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे दिन अब ये मैचेस आपको इसी चैनल पर लाइव देखने को मिलेंगे। जवाद द न्यू मैन इन, जवाद आ रहे हैं नए बल्लेबाज हमारे साथ, हमारे साइड में सुरेंद्र सर और उसी के साथ कादर भाई इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सुरेंद्र सर की बात करें तो उनके साथ भी बहुत बार हमने माइक शेयर किया है। और Yes, we need the captain of OBGCC. Please be here immediately for the toss. The opposition team captain is waiting here. OBGCC captain or any player, we need somebody for the toss immediately. OBGCC team manager, please note, we need your captain immediately for the toss. Yes, over to you, Chirag. थैंक यू सर। आप इस टूर्नामेंट के कर्ता करविता जैसे सर को देख रहे थे, लेकिन अपील हो रही है कि अपील में उतना दम है नहीं, नहीं, नहीं। अंपायर ने कहा नॉट आउट। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे अब तक सर स्कोर कार्ड पे लगे सर ओवर नंबर ये दूसरा, पहले 2 गेंदें खराब की थी जरूर, लेकिन उसके बाद वापसी। रिवर्स एटम करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं, गेंद आती हुई डॉट। जवाद
अब तक ये देखिए रिप्ले में देखिए ये गेंद को जिस प्रकार से इन्होंने खेला था, गेंद पैरों पे जरूर लगी, बिंदी गेंद आती हुई। स्कोर कार्ड की बात की जाए 7 रन, ओवर नंबर चलता हुआ ये दूसरे ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आनी शेष। आप देख रहे हो एसीएल एशियन क्रिकेट लीग का ये सीजन 2 के लिए आज हमारे साथ काफी सारी महिला दर्शक भी आए हैं, बहुत सारी फैमिलीज आई हैं, उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। एशियन क्रिकेट लीग के पूरे कमेटी की ओर से आप सभी आएंगे तो इस टूर्नामेंट को एक अलग मुकाम मिलेगा, अलग मजा आएगा। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, खेलना चाह रहे थे, ज्यादा बाहर गेंद है, वाइड बॉल। इस ओवर की कहानी देखें सर, अब तक 3 वाइड इस ओवर में आए हैं और स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 8 रन। पहले ओवर में रन थे 5 और इस ओवर में 3 वाइड। यही कुछ बताती हुई कि गेंदबाज ने शाहजी ने अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को शांत रखा है। इस बार गेंद बल्ले के बीचों बीच ये जाता हुआ, ये छक्का नहीं अट्टा, व्हाट बैटिंग, बहुत बड़ा सिक्सर। जो प्रेशर बनाया गया था उस प्रेशर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए और ओवर नंबर 2 खत्म हुआ। ये 6 होने के साथ डीजे की ओर जाएंगे, फिर मैदान की ओर आएंगे। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे। Calls heads. It's heads. Ashraf Fazlan, you won the toss and you would like to choose bat or ball. I would like to choose ball. You're going to choose bowling first, Prashant. Batting first again in Dynamic Sports Ground. We saw a couple of games, 65 and almost 70 runs. Had to finish this game. A tough one to chase anything more than 60. Yeah, we are expecting that. We would like to go above 70 to defend this. Thank you so much, guys. Have a good one. Ashraf Fazlan and Prashant, 2 captains of OBCC. And the opposition team, Kovic CC, will be right after this game. थैंक यू शहजाद सर। मैच की ओर बनेंगे। पहली 5 गेंदें काफी अच्छी की, लेकिन एक खराब गेंद सुल्फान और जवाद ने एक सिक्सर खेला। और सुल्फान की बात की जाए तो इनके पास वो क्षमता है और यही वो खिलाड़ी है, यही वो कप्तान है जो अब क्या वो सीना तान के चलेगा, क्योंकि यही वो खतरनाक बल्लेबाज है जो टेक्नोमीडिया स्ट्राइकर्स के लिए अहम भूमिका निभाने वाले। 24 गेंदें और रन चाहिए अब 42। 24-42। पहली गेंद अंदर की तरफ आई, गेंद ने बाहरी किनारा जरूर लिया, बल्ले का निचला हिस्सा जरूर लगा था, गेंद आती हुई डॉट। खुद कप्तान अब है और टेक्नोमीडिया की क्या वो ये जो नैया है वो थोड़ा सा बीच मैदान में अटक गई है कि यहां से वो उसको पार लगाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि 23 गेंदें 42 रन, हालांकि स्कोर इतना नहीं था, लेकिन इफ्जल भाई की वो बल्लेबाजी और उसके बाद ये मैच पूरी तरह से बदलता हुआ टेक्नोमीडिया स्ट्राइकर्स को चाहिए। 23 गेंदों में 42 रन। गेंदबाजी के लिए जीशान, काफी अच्छा ओवर इन्होंने पहला किया था। ओहो लाजवाब गेंदबाजी, लेकिन गेंद काफी बाहर है, वाइड बॉल। थोड़ा सा गेंद ज्यादा दिशा बदलती हुई और इसी कारण एक्स्ट्रा, मिस्टर एक्स्ट्रा की बात करें, पिछले ओवर में 2 वाइड और इस ओवर में अब तक 1 वाइड 1 सिक्सर। कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए वो 10.70 के आसपास, यानी 11 के आसपास, लेकिन जब तक सुल्फान है कुछ भी हो सकता है। गेंदबाजी के लिए जीशान, ओवर दूसरा कर रहे हैं अपने टीम, अपना खुद का और टीम के लिए तीसरा ओवर। फुल टॉस गेंद है और गेंद हवा में जरूर है, फील्डर आते हुए काफी बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में आती हुई। जो बल्लेबाज काफी खतरनाक दिख रहे थे वही बल्लेबाज आज ना कुछ कर पाए, 0 का चश्मा पहन के ये लौटते हुए पवेलियन। काफी बड़ा विकेट है ये।
Chiragji, we always hear the commenters occurs and always praising about this guy whenever he comes in. But I was very, very quiet. You were just talking about this. Zulfan Salim had a fantastic journey in the last tournament. It stopped that, but just not enough to beat the man in that long on region. It was a fantastic catch. Has been taken in the deep. It's a big, big fish. They got the needed, that big breakthrough in this over, and it was produced by this man again, Zishan. Take a bow. What a wicket. What a momentum this game. They got Zulfan Salim. They need to capitalize on the momentum here. Get it a couple of wickets more. They'll be pretty much back in this game. जरूर है, हम हमेशा कहते हैं सर, क्रिकेट ये जो है, आपने क्रिकेट को रंग बदलते हुए देखा है, लेकिन क्रिकेट का गेम ये उससे भी अच्छा, काफी जोरों से पूरी तरह से गेम बदलता है. और ये देखिए अब साजिद, न्यू मैन इन, ये नए बल्लेबाज है. अब इनके ऊपर भी हमारी नजरें होने वाले, क्योंकि ये बाएं हाथ के बल्लेबाज है. स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे भी हम नजर रखने वाले हैं. जिशान की ये गेंद इस बार थोड़ा सा बल्लेबाज ने फुल टॉस गेंद थी, लेकिन उसको सम्मान दिया. सर हम क्रिकेट में हमेशा कहते हैं कि अच्छी गेंदों का सम्मान करो, बुरी गेंदों का अपमान करो. ये थोड़ी सी बुरी वाली थी, लेकिन बल्लेबाज ने कहा विकेट खोया हमने अभी अभी, इसीलिए उस गेंद को आसानी के साथ खेला. स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पे. 15 पे जो गाड़ी रुकी थी, अब वो 16 के स्टेशन पे जाती हुई रनों के. जीशान वाटर बॉलिंग, इनकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि पावर प्ले का पहला ओवर इन्होंने काफी अच्छा किया था, और उसके बाद ये तीसरे ओवर में अच्छी वापसी करते हुए 16 लॉस ऑफ 2, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस. आप देख रहे हो एशियन क्रिकेट लीग का ये सीजन 2. जीशान अच्छी गेंद ऑप्शन के बाहर वाली, जवाब जो काफी देर के बाद स्ट्राइक पे आए. बात की बात करें तो एक सिक्सर इन्होंने जरूर लगाया, लेकिन गेंदे खेले इन्होंने अब तक 4 गेंदों में रन बनाए अपने टीम के लिए 7. स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 17. ओवर नंबर तीसरा बीच मैदान के अंदर, 2 गेंदे अभी 20 ओवर की आनी शेष. टेक्नो मीडिया स्ट्राइकर्स को इस मुकाबले को अगर जीतना है तो एक एंकर रोल निभाना होगा एक बल्लेबाज को, और एक बल्लेबाज को खुल के बल्लेबाजी करनी होगी. जीशान, इन्होंने जो गेंदबाजी की है उसके बारे में तो चर्चाएं होंगी ही होंगी. कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक आए, थोड़ा सा आगे आके गेंद को सम्मान दिया. 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़े से बदलाव, क्योंकि अब बल्लेबाज जानता है जीशान का ये आखिरी ओवर है. जीशान ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, अब टेक्नो मीडिया के बल्लेबाज यही सोच रहे हैं कि अब इन्हें विकेट नहीं देना है, अब इनका ओवर थोड़ा सा निकालना है, और उसके बाद जब नया गेंदबाज आएगा तो उसके ऊपर अटैक करना है. यही माइंडसेट के साथ अब चलती हुई यहाँ पे टेक्नो मीडिया. आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, लास्ट बॉल, द थर्ड ओवर, 18 लॉस ऑफ 2. केआरसी जिन्होंने 55 रन बनाए थे पहले इनिंग में. बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद अच्छे से बल्ले पे नहीं आए, वहां पे थोड़ा सा फंबल, इफ्जल भाई थोड़ा सा वहां पे गिरते हुए, लेकिन 2 रन पूरे करेंगे दोनों बल्लेबाज. ओवर समाप्त होंगे. तीसरे की कोशिश हो रही, तीसरा भी पूरा करेंगे. हमारे स्कोरर ने भी कहा था कि भाई 2 रन पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहां पे फंबल देखने को मिला और ये 3 रन पूरे कर लिए. स्कोर कार्ड की बात की जाए, 3 ओवर की समाप्ति, 7 के औसत से रन बने 21. अभी भी आखिरी 18 गेंदों में रन चाहिए 35. 35 रन रिक्वायर्ड इन 18 बॉल्स. सर आपके और आएंगे. सर जिस प्रकार से हम पहले इनिंग की बात करें, पहले इनिंग में जो रन बने थे वो आखिरी 2 ओवर में आए थे. अब यहां से 18 गेंदों में रन चाहिए 35. कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रन रेट 12 के आसपास है. क्या लगता है आपको, क्योंकि आप बहुत सारे मैचेस यहाँ पे डायनामिक स्पोर्ट्स ग्राउंड पे करते हो, तो ये मुकाबला कहा जाएगा? It's pretty much balanced according to me, and just because of the fact they got a big wicket of Zulfan Salim, but don't forget Jawad Jabbo is also hails from the same place where Zulfan comes from. Teammates, they are friends for so many years, and this man has to play the anchor role now. Zulfan is back at the dugout. This match, I reckon it's 50-50 chances. It could be for anybody. It could be for KRCC, or it could be for the opposition team as well. It could be Techno Media Strikers. If they move on with this partnership without losing any wickets, Jawad is going to definitely change his gear, look for big shots, and he knows his role really well. He has to play, as you rightly mentioned, Chirag, he has to play the anchor role here, because they lost Zulfan Salim. Jawad has to be the key player for Techno Media Strikers.
सर हम हमेशा आईपीएल में कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है C8 का, लेकिन अब जब आते हैं ACL में तो ये जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है वो टेक्नोमीडिया का है। तो टेक्नोमीडिया का ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, ये ड्रिंक्स ब्रेक हमने अब इंजॉय किया है, लेकिन ग्राउंड में आ गया था पानी, क्या बदलने वाली है किस गेम की कहानी, ये देखना चाहेंगे क्योंकि मुकाबले में जान डालनी होगी। और ये देखिए थोड़ा सा स्कोर की तरफ जाएंगे, आड़े बल्ले से लगातार। सर जब हम क्रिकेट की भाषा की बात करते हैं या फिर हम क्रिकेट की जब हम क्रिकेट कोचिंग के लिए जाते हैं तो हमेशा कहा जाता है सर कि ऑफ स्टंप की गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर ही खेलना चाहिए, यानी जैसी गेंद वैसी नसीहत। अगर आप ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पे खेलेंगे तो गेंद आने वाली नहीं बल्ले पे, और यही गलतियां करते हुए जवाब, क्योंकि वो ऑन साइड पे ज्यादा खेलने की कोशिश करते हुए। Yes, DK with the ball. Left it over the off stump and waiting for the umpire's call. I reckon it's a legal delivery. DK was too good. DK Anand, he played really well in the last tournament. He was one of the over he ball. He got a couple of wickets. He is going to continue that confidence level he has. The captain is trusting on his ability. Riaz has given him the responsibility ball. This is very important over here. 21-4-2. Good shot. Has he got enough? I don't think so. It's taken. He has taken the blinder in the long off region. Just looked like it was going to go for the 6th the maximum. But look at the way it's pulled off something phenomenal. Just few inches away from the boundary line. And that's a big wicket. Jawad Jabu has to depart on this occasion. And the tricky situation in this game. They're pretty much balanced. But I'll tell you what, Chirag, this could be a moment. This could be a moment they need to capitalize. It's a big wicket. You got to give credit to the fielder there. Kept his eye on the ball. And what a good judgment and what a good catch. सर इंडिया में एक जो रील्स काफी फेमस है, इट्स लाइक अ वाव वाव वाव, और वैसा ही कुछ कैच था। जिस प्रकार से ये कैच को लपका गया, ये सेलिब्रेशन ही बताता भाई ये कितनी बड़ी विकेट थी। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में थोड़ा सा ध्यान हमारा भी जाएगा क्योंकि 21 रन अब तक बने हैं और विकेट खोए हैं 3। आनंद ने अपनी टीम को आनंद दिया है क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने गेंदबाजी की है, थोड़ा सा यहाँ पे हर्ष उल्लास का जो वातावरण है उसको वो कायम रखते हुए। और हम बात करें अगर टेक्नोमीडिया स्ट्राइकर्स की, तो उनके खेमे में अब थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल बन चुका है क्योंकि विकेट खो रहे वो सर। Yes, you got to give credit to the man who taken the blinder there. Jabir, what a good catch under pressure, never easy. Now, Ehsan has just arrived in the crease. He wants to play his natural game, play towards that long on region. Good fielding there, allowed the batter to go for only a single. Off the mark in Sal Ehsan. After losing Jawad's wicket, 2 big fishes out of the dugout for this team, Technomedia. They need to test the middle order. 2 batters in the middle. Ehsan just joined. You have Sajid Jadi, 2 from 2. This partnership is going to be very crucial for Technomedia. Shot is on towards the extra cover. There is protection, but you cannot just stop it. Too lazy to reach to the ball. It's sailing towards the extra cover region. What a time to bring that boundary. They might have lost a couple of wickets, but they need to keep the momentum, getting the runs what they needed now. Technomedia is moving on. 26-4-3. 30 more runs from 13 deliveries. It's quite possible, Chirag. 13 गेंद अभी भी बाकी है, 30 रन चाहिए। सर क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अच्छी गेंद, इस बार गेंद पे अच्छे से आए नहीं बल्लेबाज, डायरेक्ट हिट जरूर थी लेकिन अंपायर ने कहा यस, बल्लेबाज सुरक्षित। ओवर थ्रो जरूर हुआ लेकिन जो दूसरे बल्लेबाज थे वो काफी दूर चले गए थे एहसान, इसी कारण 1 ही रन मिलेगा। और मुझे लगता है स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे
4 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में लगे 27। अब आने वाले 2 ओवर में रन चाहिए 29। सर पिछले मैच की दूसरी इनिंग की बात करें, ऐसे ही रन चाहिए थे जब बल्लेबाजी कर रही थी टीम, तो अब 2 ओवर में 29। जैसे हमने कहा कि डायनामिक स्पोर्ट्स के इस ग्राउंड पे रन चेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कल के मुकाबले भी हमने भी देखे थे कल, तो रन चेस नहीं होते। आप पहले बल्लेबाजी करते हुए बेझिझक बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन जब आप रन चेस कर रहे हो तो इतना आसान नहीं होता, प्रेशर वो उतना होता है। और हम जब बात करते हैं एसीएल की इस टूर्नामेंट की, तो मजा आ रहा है, क्योंकि ये पहला ही दिन है और पहले दिन में दर्शकों ने जिस प्रकार से यहाँ पे जो उत्साह दिखाया है, हम सारे दर्शकों को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो माहौल बना है ये क्रिकेट वाला माहौल है और ये उत्साह वाला माहौल यहाँ पे एशियन क्रिकेट लीग में आप सीजन 2 में देख रहे हो। और सभी दर्शकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, भारी मात्रा में वो आए। इस मैच के बाद मुझे लगता है, या आखिरी मैच के बाद, वो भाग्यवान विजेता होगा जिसके लिए गिफ्ट हैम्पर हम देने वाले हैं। उसका वैगन व्हील हमारे स्क्रीन पे घूमेगा और कौन होगा वो लक्की विजेता, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब उमर गेंदबाजी के मोर्चे पे सामने होंगे साजिर, जिन्होंने वो स्ट्रोक खेला था सर, वो कवर में मुझे सौरव गांगुली की याद आई थी। इस बार थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, थोड़े से चलते चलते इस गेंद पर खेला। जीशान गेंद को फील्ड करेंगे, एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं। अब इक्वेशन ये कहता हुआ कि आने वाली गेंदें है 11, रन चाहिए 28। तो हम हमेशा कमेंट्री करते हुए कहते हैं सर कि नहीं चलेगा इक्का दुक्का, मारना पड़ेगा छक्का या चौका, क्योंकि अब एक एक से कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको अपना गियर चेंज करना होगा और गियर चेंज करेंगे तो ही मैच में आएंगे। साजिद सर। Absolutely, they can't wait for the final over. They need to get maximum runs in this over. Ehsan Pathan. Swing and a miss, and it's a dot delivery. No signal from the umpire, back of the length. Making it a point. Umar is bowling to his teammate. They play together. Now this is interesting how he's going to handle the remaining deliveries in this. Plenty of runs required. The first innings provided 70. First match, first innings 70. Second match, first innings only 56. Now this is 56 to win. Connection not possible. Asking the question. Caught behind umpire. Raised his finger. A wicket goes here. Most important is a dot ball. The pressure is mounting here for Techno Media Strikers after losing couple of big wickets up from Zulfan and Jawad Jabbar already back in the dugout. Ehsan wanted to play, freeze his arm, just not able to get right in the middle of the bat. A genuine edge, and keeper making no mistake. Another wicket goes here. They are in trouble. They need to bring somebody who can play an unbelievable innings if they want to get to the first match for Techno Media Strikers. The high reputation having one of the big hitters in Qatar, Zulfan Salim, and also Jawad Jabbar, just not enough. And again, some brilliant captaincy there. The opposition team, KRCC, has defended really well. New batter just joined there in the middle. Locking for that helicopter run out chance. It's all happening there. It's quite unnecessary. They didn't have to go for that run at all, and desperately wants to get some runs on the board. And this is the penultimate over. A lot of runs required to win this match. Techno Media Strikers doing everything possible to get through the line. Just not happening in favor of them. As complete mess towards the end. Lost another wicket in the hunt of that one single. They wanted to get the man from the non-strikers to end to come and bat freely. He's quite capable there, just not enough. It's all happening in the favor of Afzal Khan, Riyas and their boys. They are defending this. It's not enough runs on the board. Look at the way the defense is less than 60 runs. 56 in Dynamic Sports Round was quite possible to chase. They are done really well. The bowling department has extremely
came back strongly to defend this one. Syed is the man who has to depart now. As an absolute communication error in the middle between two batters. He's coming back to this game, and also the spectators who are sitting in the gallery got plenty of prizes to be won. The first day of this ACL brought to you by Techno Media, well supported by Justice Auto. If you can manage to catch this flying ball with single-handedly, you can get 100 Qatari Riyal gift voucher. Sponsored by Mr. Anish Alexander, one of the cricket lovers here. Yes, after a bit of confusion, we are back here. 28 for 5. 2 balls left in this over. They still require 28 runs. Yes, let's move on. 2 balls left in this over. Edge, and there will be a protection. Riaz is not going to miss that easily. It's as easy as you want. Yes, look at that. He's juggling towards it. It's very happy. Side, of course, it's Riaz. You can't keep this man away from the action at all. Very much look at the energy, his confidence. This team is pretty much led by Ifzal Khan, and Riaz is always there whenever you need him. Look at the way the screen you can see Riaz Ba is just juggling towards the stump. Well, look at the celebration in some or other way. He celebrates whatever the situation it may be. Chirag, the very happy man out there, a very happy team of KRCC. They defended Techno Media strikers really well. सर अगर हम पहले इनिंग की बात करें, पहले इनिंग में रन नहीं बन रहे थे और जहां पे इफ्जल भाई का वो स्ट्राइक चेंज हुआ और वहां से वो मैच पूरी तरह से पलटा है। और अब देखिए जिस प्रकार से हम बात करें अगर सीआरसी टीम की, जिस प्रकार से इन्होंने मैच को पकड़ के रखा है, उन्होंने उसके बाद वो मोमेंटम चेंज होने ही नहीं दिया। लाजवाब गेंदबाजी। ये आखिरी 6 गेंदे और 7 गेंदे, लास्ट बॉल है। There's 1 ball to go. 28 for 6. Sargent just arrived in the crease. There's 1 ball to go. 7 balls left, and they still need 28 runs to win this match. Swing and a miss. That's a dot ball to complete. What an over. Got what they needed. Asking the question is very delighted there. So 28 runs require Chirag from the last 6 deliveries. And this is Techno Media strikers. Have to strike, have to play something unbelievable in the last 6 deliveries if they want to win this match. सर साजिर को अब यहाँ से कुछ करना हो। ये देखिए, ये नज़ारे देखिए, ये छोटू भी इस मैच को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं और मज़ा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि फैमिलीज काफ़ी सारी आ रहे हैं और फैमिली जिस प्रकार से इंजॉय कर रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमारे अगर दाहिने तरफ देखें, हमारे जो महिला दर्शक है वो भी इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए उनके लेडीज एंड किड्स लॉन्च में वो बैठ के इस पूरे टूर्नामेंट का मजा उठा रहे, ले रहे हैं। और हम देख रहे हैं आखिरी 6 गेंदे, क्या टेक्नो माइंड्रा स्ट्राइकर्स यहां से कुछ अलग करेगी, क्या वो कहेंगी कि ऑल इज वेल। लेकिन हम सारे टीमों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे सर, क्योंकि सारे टीमों ने जो टाइम दिया गया उस टाइम को, ये देखिए आप जो लॉन्च देख रहे हैं, लेडीज एंड किड्स लॉन्च आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, हमारे सारे महिला दर्शक इस मैच को लुत्फ उठाते हुए। लेकिन ये आखिरी ओवर,
ये है वो खिलाड़ी जो मैच को बदल सकते हैं, और उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे साजिर। इस मैच को वो बदल सकते हैं। आखिरी 5 गेंदे, रन चाहिए अब 22, 22 रिक्वायर्स इन 5 डिलीवरीज। मजा आने वाला है सर, यही मजा आता है। इमरान की पहली गेंद पे उनका स्वागत किया, साजिर ने कहा कि मैं हूं ना। व्हाट अ बैटिंग। आखिरी 5 गेंदे 22 रन। मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट में कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, और इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज ने की है। अफजल भाई गेंद को जब तक फील्ड करे, डॉट बॉल। आखिरी 4 गेंदों में रन चाहिए अब 22, 22 रिक्वायर्ड इन 4 डिलीवरीज। 22 की जरूरत है। आप देख रहे हैं एशियन क्रिकेट लीग का ये पहला दिन ही जिस प्रकार से आज खेला गया, थोड़ा सा हम लेट हुए, उसके लिए हम क्षमा मांगना चाहेंगे हमारे सारे दर्शकों से। लेकिन ये आखिरी 4 गेंदे फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में है। अब पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश होगी, फंबल हुआ है लेकिन 2 रन नहीं रोक पाएंगे। 2 होने के साथ स्कोर कार्ड में अब बदलाव। स्कोर कार्ड पे लगे अब 36 रन। आखिरी 3 गेंदे, रनों की बात की जाए रन चाहिए 20। 3 बॉल्स रिमेनिंग, 20 रन रिक्वायर्ड। 3 गेंदों में 20 की जरूरत है। और अभी भी अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो ये पहला दिन है, और 10 दिन आपको इस टूर्नामेंट में बहुत सारे अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। आप श्रीलाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली गेंद, इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद ज्यादा देर हवा में है, फील्डर उसके नीचे आएंगे, कोई गलती नहीं, विकेट। साजिर बैक टू द पेविलियन, विकेट आता हुआ और डीजे बजता हुआ। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे। और ये विकेट काफी बहुत कुछ कह चुका है कि टेक्नो मीडिया ने इस मुकाबले को अपने हाथों से गंवाया है। अब अभी भी इस ओवर की बात करें तो इस ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर 36, 36 रन। जोखुराम, अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, गेंद को खेला, फील्डर वहां पे मौजूद है, कोई ज्यादा रन नहीं, और सीआरसी ने मुकाबले को जीत लिया है। क्या क्या इन खिलाड़ियों का कहना, क्योंकि पहले इनिंग में रन नहीं बन रहे थे, लेकिन इफजल भाई की वो पारी पूरी तरह से मैच को बदलाव देती हुई, और उसके बाद ये आप देख सकते हो इफजल भाई एंड टीम केआरसीसी वन बाय 18 रन। वो 18 रन जो स्ट्राइक रोटेट होने के बाद चले गए थे, वो काफी महंगे साबित होते हुए।
तो ये लकी ड्रॉ होने जा रहा है, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। और 1 2 3 एंड स्पिन। ये स्पिन हो रहा है, अब कौन सा नंबर आएगा, कौन वो लकी विजेता है जिसको गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। और द नंबर है 101। 101 रुपए की ये देनगी है। 101। जिस किसी भी दर्शक का नंबर है वो आ जाए और गिफ्ट हैम्पर यहां से जरूर कलेक्ट करें। टेक्नो मीडिया की तरफ से यहाँ पे जो गिफ्ट हैम्पर्स आपको दिए जा रहे हैं 101 नंबर, अगर आप यहाँ पे हैं 101 तो आप जरूर यहाँ पे आए और इस गिफ्ट हैम्पर को अपने साथ लेके जाए। ये देखिए ये छोटा दर्शक, हालांकि यहाँ पे सर्दी काफी ज्यादा है लेकिन अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ये सारे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं श्री लाइव वीडियोस पे। आप देख सकते हो ये नन्ही सी प्यारी सी बिटिया इस मुकाबले को देखने के लिए आई है और उनका भी स्वागत है और सभी का स्वागत है इस एशियन क्रिकेट लीग के पहले दिन में। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, ऑनलाइन व्यूवर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। ये देखिए आज सारे जो फैमिलीज आए हैं उन फैमिलीज को धन्यवाद देना चाहेंगे और इंजॉय कर रहे हैं सारी फैमिलीज यहाँ पे ये पहले दिन में। अगले मुकाबले की ओर भी जाने वाले हैं लेकिन मैन ऑफ द मैच सेरेमनी की तरफ जाएंगे। चलजार सर हमारे साथ जुड़ेंगे मैन ऑफ द मैच सेरेमनी की तरफ और मैन ऑफ द मैच सेरेमनी आपको देखने को मिलने वाली है। ये सारे व्यूवर्स। All right, we're going to announce the man of the match. A terrific game. He had once again, he proved he's one of the best when it comes to tennis ball. Yes, Khan. The Tiger was here again. Afzal Khan is the man of the match. You can come and collect the man of the match award right here. And also we have the lucky winner of the raffle draw. Coupon number 101. Irshad. Mr. Irshad is getting that second lucky winner of this evening. He is going to get the gift hamper here as well. At the same time we announce the man of the match already. Afzal Khan. You can come and collect your man of the match award, Afzal ji. KRCC has defended really well that score of 56 in the allotted 6 overs. Mr. Qadir is going to give away the gift hamper for the lucky draw winner. Mr. Irshad is receiving from Mr. Qadir. Congratulations, Mr. Irshad, and thank you so much, Mr. Qadir. I'll move to the man of the match award to be given to Afzal Khan from KRCC. You can come and collect. So Afzal ji, if you can please come here and collect your man of the match trophy right here. KRCC is winning this contest against Techno Media quite convincingly. What an innings he played. He was struggling to get runs. Couple of big sixes from big man. Afzal Khan once again performing with the bat. Leading from the front. The man of the match in the last game. Afzal Khan, you can come and collect your man of the match trophy.
as very surprisingly is going to bowl first. Ifzalji, यहाँ जाइए आप. There he comes finally. Mr. Ifzal Khan right here. We all have been waiting for you, Ifzalji. What an innings you played. Terrific performance. And he's going to get the man of the match trophy from Mr. Qadir Bhai. Brilliant innings, and KRCC are just too good against Techno Media strikers. The one man who stood there like playing an anchor role. Couple of big sixes, and here is the man of the match. Well played, Ifzalji, the man of the match in the last game. And also he is receiving the gift hamper from Men's Style Saloon and new Artifix Printing and Gifts is going to give away the gift hamper, and also he is getting a gift hamper from Food Art Restaurant. So 3 prizes for Ifzalji for that brilliant performance. Congratulations. Thank you so much, Mr. Qadir. Over to you, Chirag. We'll move to the game number 3. OBGCC taking on Kovic CC. 2 opening batters there in the middle. It's ball number 1. Yes, Sampa, let's go. Ball number 1. Game number 3. OBGCC batting first. Catches the call. No chance for anyone. Deep square leg. And an absolute gift given and punished. Boundary number 1. Right from the very first ball. Started off in style. Anas alongside Vipin Vaishak. 2 opening batters for OBGCC to start the bowling from Kovic CC. It's Bhaskaran to start the proceedings. Trying to attempt a reverse it. He's got a nick that is racing towards the boundary. Back-to-back boundaries to start this innings. What a good start for this team. They have been asked to bat first against the opposition team captain. 2 balls sailing towards the boundary. Anas, 8 from 2. Oh, brilliant. Thank you so much. You just played that brilliantly. Right in the middle of the bat, in the slot. Clearing the boundary again over the square leg region. Has 6 after a couple of boundaries. It's a magnificent hit. They have started off really well. Bhaskaran is feeling the pressure. Right from the very first over. 14 runs on the board within no time. OBGCC. The captain, Asif Hassan, have been asked to bat first. This is a kind of start they needed, provided by this man Anas. Stand and deliver. 2 boundaries and a big 6 over the deep square leg. Score moved to 14 for no loss.
trying to hit towards that fine leg regions. Bit of innovation, but just not able to connect on this occasion. He was batting really well, trying to do something different. BGCS started off well. First 2 boundaries from the first 2 deliveries. After that, there is 6 as a dot ball. Looks like struggling there. The batter probably got hit when he was trying to attempt a reverse sweep. Yes, moving on with a quick one from Baston. Was beaten and probably the batters were not in a position to play that shot. It's all good to go now. BGCC 14-4 no loss. Batting first. Good shot, driven handsomely. It's not going to get the boundaries. Good fielding there in the deep extra cover. Allowed the batter to complete 2 more runs. Perfect cricket shot. Not only the slogging, this man has started off really well. Couple of boundaries, a 6 and 2 more runs now. The move to 16 quickly. BGCC, 1 ball to go to complete the power play. Launched in style, beautifully done. Was it a one-handed catch in the gallery? We'll have to wait for the replay. Was it taken with one hand? You can straight away come and get 100 Qatari Riyal. Brought to you by Mr. Anish Alexander. If you had taken, we're going to have a look at this replay. The gallery, targeting the gallery, the right in the mid-wicket region in this ground. If you can manage to catch with one hand, you will walk away with 100 Qatari Riyals. That's a reward for you. Another catch has been dropped in the gallery. So guys, got to make sure you have good skills to catch the balls. And don't try with 2 hands, try with 1 hand. Now Naman show has just begun. He bowled really well for Doha Rockers in the last tournament. He's coming to bowl this quick 6 deliveries. A quick Pakistani pace bowler is going to perform once again in Dynamic Sports Ground. An expensive power play, and Naman has to bowl his best 6 deliveries here to get things back in track for the falling team. As up against the left-hand batter. Vaishak. Zanas has played really well in the first 6. And Nauman Khan is choosing in to Vaishak. Around the wicket. Oh, brilliant. Asking the question, was there any nick? And umpire says, yes, you can. That's an absolute ripper. That's gone with some speed and keeper making no mistake. Safe hand, safe there with that catch, not missing those easy ones. I got a big breakthrough. Yes,
Anna started off really well, couple of boundaries and a 6. And Vaishak just not able to read the line in length. Ended up giving a genuine edge and keeper making the rest. Back in this game, a dot ball to start the second over. With the wicket, Norman produced a much needed breakthrough from the very first delivery. So we have 70 and 56 from the last 2 games. The captain has decided to bat first, and on this game, the game number 3 between OBG and Kovik CC, the captain winning the toss and elected to ball first. That's what exactly they needed to get some breakthrough. The up friend and Noman produced an important breakthrough, a big wicket. New batter joined there in the middle. Prince has just arrived. Just well played. That's flick of the wrist. Oh, bit of confusion there. Fumble. Non-strikers were not ready to take off. And Prince says and no, and finally it's a dot ball. Anas was desperately wanted to come to the batting crease. Good to see Prince playing in the tournament after a short break. It's a very good player. Up front, he can strike on both sides of the wicket. Very strong on onside. Placed backward point, will cut it off. It's no run. And Noman just want to make sure that it's fielded. Another dot ball. After a very good start. This man has come and just paused the run flow. Taken a wicket from the very first ball. Noman Khan. It's moving on 22 for 1. This time connects, catches the call. Easy one, is not going to miss that. And a well judged catch. He celebrates the bowler. Look at the celebration. Yes, exactly what it deserves. Has 2 wickets in this over. Norman produces. A captain needs him to come. It's one of the main weapon. They have got good bowling lineup. Another wicket goes here. Prince comes and he goes back to the dugout. Anna still there. They need to make a partnership. A new batter will join there in the middle. So OCC, after a brilliant start, they lost a couple of wickets within no time. So once again reminding the players the allotted time to complete the innings is 35 minutes. We have the time that is being set right in the commentary box. And the rewards for the spectators as well. Those people who are sitting in the gallery, if you can catch the flying ball with one hand, you'll get away 100 Qatari Riyals gift voucher, of anywhere. If you can catch the ball, you get gift hampers as well. It's all being brought to you by Techno Media, bringing the best cricket tournament in the country. This is ACL Season 2. Prashant Nair. Skipper has brilliant placement. It's racing towards the boundary. Was it going to be fielder? Good footwork there. Started off with a couple of runs. Captain of OBGCC, Prashant Nair, very experienced campaigner. He's played plenty of tournaments in the same ground. A very popular cricketer. Score moved to 24. Lost couple of wickets. 1 ball to go. Norman's figure is 2-4-2. In there, catches the ball. Who wants this? Fielder underneath it. It's going to be a tough one. Has he taken a blinder? He celebrates wicket number 3 for Norman. Look at the way he celebrates that. Exactly what the team needed. This man, the Pakistani quick pace bowler, comes and taken 3 wickets.
His best friend Jabir Khan is also very happy there. His teammate has taken 3 wickets. That's an unbelievable turnaround in this game after being hit 14 runs in the first power play. Has messed up completely. Regular interval, they lost wickets. 3 wickets, what a figure for Nauman. Prashant has to go back 2 from 2. Caught by Rashid and balled by Nauman. They are in trouble now. OBGCC have been asked to bat first again. The opposition team captain need a partnership. They need a brilliant partnership here to get some runs on the board. It's 24-4-3 after 2 overs. Right after this, so there will be a strategic timeout. You can plan the second half of the innings. A new batter joined there. It's Harris. The good news for OBCC is Anas still there. He is playing really well. 22. Couple of boundaries, a massive 6. He needs to move on. He was watching from the non-strikers and the wickets kept losing. Big shot. Has he got enough? 1 bounce. No chance for the fielder in the long off region. Anas continue to impress here. A boundary from the very first ball. Shinaz there into the attack. Little bit of width offer towards the offside and a brilliant cover drive all the way to the long off region. And a much needed boundary for the batting team. They move to 28 now. 2.1 overs. In spite of losing 3 wickets, they kept the run rate going. Left it over the off stump, it's a wide. So what Shinaz need to do is wicket to wicket bowling. Brilliant, but just not enough to beat the man in that circle. Has managed to get a single on this occasion. Scoreboard ticking on. Now Harris needs to face his first ball. A right-arm batter needs to give a company out there in the middle to Anas. Well played, just not enough over the bowler. He'll get a single. Brings back Anas into the crease. Need to play sensibly now to get some runs on the board. Minimum 60 runs is required here to get a decent runs in dynamic sports ground. 60 is the pass score. So more than 60 is tough to chase. Big shot, catches the goal. In the air, 2 fielders underneath it. Who wants this? And made a complete mess. A call is very important there. 2 fielders. One from the deep mid wicket, one from the deep square leg. Put down. It was very, very easy if it was one person who was attempting to catch that. No calls from the fielders. Made a complete mess towards the end. An absolute dolly. Look at that replay. You can see that 2 fielders underneath it. It was in the air for a long, long time. You can see in the LED screen on the right side of this ground. Watching the replay. We're live here on YouTube. Reverse sweep, but not an easy. That's maybe missed his line. That's a wide given by the umpire. Score moved to 33-4-3. 2 deliveries left.
to complete the third over. So what they need now is a good partnership there in the middle. Anas playing really well. It's on 28 from 9, 3 boundaries and 2 sixes. Another one attempting a reverse sweep, getting a leading edge, waiting for the umpire's call. Was it played or a leg by? Yes, looks like a leg by called by umpire. It's moved to 34, 1 to go to complete, and after this strategic timeout, they can play the rest of the innings. What they need is another 25 runs to get to the pass score in this ground, which is around 60. So we had seen 70 and 56 the last 2 games. Well bowled right in the block hole and equally well played. Just push towards the covers. He'll retain the strike for the next over after the completion of the first 3. OBGCC moved to 35 for 3. We'll have a very short break, strategic timeout, and we're back for the rest of the innings. OBGCC have been asked to bat first against the opposition team captain Ashraf Ghazan, winning the toss, selected to bowl first. 35 for 3 from 3 overs. मुकाबले चल रहे रेड एप्पल के सम्मान में वो हम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के रूप में देखा है। नुमान यही वो गेंदबाज है जिन्होंने मैच को पलटा था, वही गेंदबाज अब फिर से गेंदबाजी के लिए आए और एक सेट बल्लेबाज को जिस प्रकार से उन्होंने खड़ा करके रखा है अनस, जिन्होंने एक छोर को संभाला है। हम हमेशा कहते हैं कि दूसरी ओर से जब विकेट जाते हैं तो आपको एक छोर को संभालना होता है। और देखिए वन मैन आर्मी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 11 गेंदे खेले 29 रन बनाए, कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं छोड़ने वाला है मुकाबला, वो एक जगह पे डटे हुए हैं। नोमान जिन्होंने पूरी मैच को पलटा था पिछले ओवर में, नोमान इस बार हल्के हाथों से गेंद को सिर्फ ढकेल दिया था जब तक पॉइंट की खिलाड़ी था डर के सर्कल के बाहर जाके गेंद को उठाए और एक रन खाते में जुड़ेगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 36 रन। हम सर नोमान की तारीफ करेंगे क्योंकि पिछले ओवर में 3 विकेट उन्होंने लिए थे और काफी बड़े थे। और हम हमेशा कहते हैं कि आप जब विकेट टेकर हो तो फिर आपकी टीम की नैया आप जरूर पार लगाते हो। नोमान गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर से तैयार होंगे, सामने होंगे हैरिस का रोल भी काफी अहम होने वाला है इस मुकाबले में। इस बार ये सूर्य कुमार यादव की याद दिलाते हुए क्या हुआ यहाँ पे अब देखना होगा। यहाँ पे क्या ये जो डिसीजन है वो जाएगा, देखना होगा कि क्या ये विकेट के लिए गए थे। जिस प्रकार से ये गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज अलग कुछ करना चाह रहे थे, तो शुक्ला शॉट काफी फेमस हुआ था, वैसे ही कुछ स्ट्रोक यहाँ पे खेलने की कोशिश। Yes, he was trying to do a Surya Kumar Yadav sky kind of shot, but just not enough to beat the man in the edge of the circle. As an appeal for run out, waiting for the umpire's final call here. Was there on time to reach to the crease? The leg by call by umpires, no signal. The runner survives. It's still there in the middle. And after the red apple strategic timeout, we are going to go for the rest of this overs in this innings. OBG 37 for 3.
catches the call, safe. No signal from the umpire. It just looked like there was an edge. Look at the speed he creates in the 23-yard pitch in Dynamic Sports Ground. Never easy. Nauman, too quick. A pace bowler comes and produces this kind of delivery. It's a treat to watch. Any youngsters were watching this live from anywhere, wherever you are, right from here in this gallery. Look at the speed he creates. Fast and furious from this Pakistani pace bowler. Nauman charging in once again to Anas. Pace off, asking the question. Again, he's very, very delighted. All of them safe. Wicket keeper has taken a couple of very good catches, just not having an edge. It's all happening there. Anas is feeling the pressure. Couple of dot deliveries. Never easy to get connected. As bowling in some speed. We saw Jabir Khan bowling last evening for Doha Rocker. This kind of deliveries were the champions. Now his teammate, his friend Nauman here. He got to reload this one. Look at this figure. Nauman, 1.5. Just considered 3 runs and 3 wickets. Well pushed and retained the strike. That's exactly what he has to do. He needs to be in the strike as much as he can. Anas is going to be the key player here as far as the batting team is concerned. Another over. Brilliant over comes to an end. Just conceded 3 runs. 2 overs completed from Nauman. Conceded 4 runs in fact. Make a pardon, just 3 wickets. 3 wickets and 4 runs from the allotted 2 overs. Unbelievable bowling. Once again, a lot of pressure being created. I request 2 captains for the next game, game number 4. Please get ready for the toss for the next game. It's all happening here in Dynamic Sports on the first day of Asian Cricket League, brought to you by Premier Techno Media in association with Chest Zenato as the main sponsor for this event. Plenty of prizes, gift hampers for the man of the match and for the spectators as well. So keep watching for the flying balls which is coming to you. If you can manage to catch with single hand, you can get away. Walk away with 100 Qatar Riyals. Coming back to this game, Anas still there in the crease. 31 from 15. 2 overs left. Rashid, no signal from the umpire. It's a dot delivery. If they can manage to get 20 more runs from the remaining deliveries in this innings, they'll reach close to 60 runs. The shot toward the square leg. He'll have to run back. Is he going to come back? Hannes says no. Brilliant performance from the bowling team. The man who is leading there, the captain of this side, Ashraf Khan, after winning the toss, elected to bowl first. Good shot. Finds the field. A good effort there. Kept the eye on the ball. In batters completed 2 more. Sheza 11 is taking on the opposition team for them for the last game of this evening. There's 1 shot.
Bowling, superb piece of delivery. It is, as I mentioned, Sheza 11 is taking on SNR Warriors led by Imran. Please get ready, guys, for the toss for the next game, the last game of day number 1 of Asian Cricket League Season 2. Coming back to this one, it's 44-3. Good shot, just not enough over the bowler's head, just a single. 41-4-3, last ball of the penultimate over. Lot of pressure on Anas, he kept losing the wickets. On the other hand, he is playing a genuine innings. 32 from 17 for Anas. Knocked him over, rattle is off stump. He has to go back. This is what he does. A man was playing really well, Anas, and he had to go for a big shot. Completely beaten and is knocked his off stump. That's a big wicket. They'll celebrate the last ball of this penultimate over. They got the wicket they needed. They are struggling now. 41-4, just 1 over left in this innings. They need to score at least 20 runs. It's 41. The pass score of this ground is 60. They kept on losing the wickets. One man who played really well, Anas, has to depart on this occasion. Brilliant piece of bowling. It's wicket to wicket. It's rattled his off stump. A new batter joined there in the middle. Akhil, there's absolutely no chance for him to settle down. He needs to go for big shots from the ball number 1. I'll move to the final over. 41 now. Back of the length, finds the fielder in the long off. Is he going to come back? Chance, very keen to go for the second run. Settle down for the single, just one coming from the first ball. 42, 5 deliveries. They need to go for big shots. At least 55 runs they need. 15 runs, that's what the target from the remaining 5 deliveries. They want to get close to the pass score in this ground. And that's a leading edge, and Captain Safe wants to throw towards the bowling and has missed the stump. Leg by call by umpire. 43 now, 4 deliveries left. Are they going to get into the 50 runs mark? One big shot will take them to 49. Swing and a miss, and was there in the edge? Umpire raised his finger. Wicket goes again. That's not happening for the batting team. Is struggling to get runs. They are in the chase. They are in the hunt for getting at least 50 runs. They get a decent runs on their belt, but just not enough. A genuine edge. Another very good catch has been taken behind the stump. Safe with the safe hands. The Faf of the man is back in the dugout. 43-5. Just left with 3 deliveries. Rashid walks into the middle. 3 deliveries left. What he can do, if he can connect one big shot, they'll be close to 50 runs mark. Shot is on, not enough, not timing on this occasion. 2 fielders made a complete mess, raising towards the boundary. A much needed one for the batting team. They will take it, desperately looking for that big shot, and runs are there now. 47, couple of deliveries left. Can they reach up to 50 runs mark? 1 big boundaries, couple of boundaries, maybe a 6 will take them to a decent score. If you can get 2 big 6s, if they can get into
a good position in this first innings. Shuffling across the crease, not a good idea. This ball in wicket to wicket right on the money, offside. Good line and length. It's a dot ball. Still on 47, one ball to go. One big shot, crucial delivery is coming up. If he can connect this one outside the park, we'll move past 50 runs. On the other side, the bowler would be looking for a dot ball. So, good shot, good placement, backward point, absolute vacant region, racing towards the boundary, the much needed one. From the last ball, they moved to 51 eventually. Running short of runs, but this man has provided a much needed runs, very, very crucial runs in the final over. They move to 51, but they come out to bat. The opposition team need 52. 70 was not chaseable. The second innings, we saw Afzal and his boys defended 56 runs. Chirag, and now it is 52. The graph is like this: 70, 56 and 51. What do you think? 56, you need another brilliant players like Afzal Khan to defend this. A good marshalling the troop. 52, are they going to defend this? Over to you, Chirag. सर अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि अनस की बल्लेबाजी अनबीटेबल थी, उनको साथ देना चाहिए था, कोई भी खिलाड़ी ने उनको वो साथ नहीं दिया और इसी कारण अगर हम अकेले अनस की बात करें तो अनस ने अपनी टीम के लिए 32 रन का योगदान दिया और उसमें अगर बात की जाए बाकी खिलाड़ियों को योगदान इतना अच्छा नहीं था, इसी कारण जो स्कोर बना है 51, 52 इज अ टारगेट। मुझे लगता है अब जो पहले मैच में ऐसा लग रहा था कि रनों का अंबार खड़ा कर दिया था, लेकिन अब ये रन नहीं बन रहे और इसका कारण है कि पिच अब उसका रंग दिखा रही है। तो 52 इज अ गुड स्कोर। मैं कहूँगा कि अगर फील्डिंग करने वाली टीम ने अगर अच्छी गेंदबाजी अच्छी टिपे पे की तो ये स्कोर भी डिफेंड हो सकता है, लेकिन अगर और मगर में क्रिकेट नहीं चलता है, वो जो अच्छा खेले वो जीते इस मैच को। लेकिन मज़ा आने वाला है, हम सेकेंड इनिंग में ज़रूर इस मैच को देखना चाहेंगे, लेकिन अब आखिरी मुकाबले की ओर भी चलना चाहेंगे क्योंकि आज की रात का आखिरी मुकाबला मैच नंबर 4, थोड़ी देर के बाद उसके टॉस सेरेमनी भी हम देखने वाले हैं, तो वो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आखिरी मुकाबले में क्या देखने को मिलने वाला है। थैंक यू। As talking about the last match of the day number 1, Sheza 11 taking on SNR Warriors. I request two captains, please be here for the toss. Imran and opposition team captain Sheza 11. Irfan, beg your pardon, Rifan and Imran, please be here for the toss, guys. So SNR Warriors captain Fires is going to come for the toss. On the other side, Sheza 11, Rifan and Fires, please be here for the toss. I'll be back after a very short break with the chase. 52 to win from 6 overs. As we are waiting for you guys for the toss, Rifan from Shiz 11 and Fires from SNR Warriors for the toss for the last game of this evening. Shiz 11 taking on SNR Warriors. Coming back to this game, 52 to win from 6 overs. It's going to be very interesting how they're going to defend this score.
Yes, 2 minutes allowed to between the innings as you're back to the chase. Are we ready to go, the umpires? 52 is the target. Kovik Sisi, two opening batters is walking to the middle. 6 overs, 52 runs to win. Prashant Nair is marshalling his troop. Very experienced player and captain. He's got to test his opening bowlers. Need to come and strike from the very first over. We've seen Noman. 3 wickets, 4 runs from 2 overs side was the tree to watch. The main strike bowler, the opposition team, they need somebody like Noman to come and produce breakthroughs. Rifan, please come for the toss. राइट अप राउंड विकेट, इस बार गेंद ज्यादा ही बाहर है। आपके पास बैंक बैलेंस कम है, आपको खर्चा भी कम करना होगा और यही गेंदबाज को सोचना होगा। मैच की ओर बढ़ेंगे और इस बार रिवर्स अटैम्प्ट करना चाह रहे गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं। डॉट बॉल, कहीं ना कहीं ये वापसी करनी होगी बल्लेबाजों को। अशरफ, अगली गेंद फिर से अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे गेंदबाज, पूरी तरह से बल्लेबाजों को बीट करते हुए। अशरफ के बल्ले से अब तक कोई रन नहीं। अशरफ और जसीम की ये जोड़ी बीच मैदान के अंदर। राशिद फिर से अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे हैं, लगातार गेंद को नहीं देख रहे। हम हमेशा कहते हैं कि बैट्समैन को इसके ऑप्शन का पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लगातार खराब शॉट सिलेक्शन आप देख सकते हैं अशरफ की तरफ से। पिछली 3 गेंदें डॉट आई है। 52 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है कोविक सीसी को और अब तक कोई बड़े स्ट्रोक की तलाश में नहीं। 2 रन अब तक आए हैं जिसमें 1 वाइड 1 सिंगल। राशिद अच्छी वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए, क्योंकि इनके पास रनों की पूंजी काफी कम है। अगली गेंद, अच्छी गेंद लाजवाब गेंदबाजी।
1 रन यहां पे जरूर मिलेगा। पिछली 5 गेंदों में रन आए 3। ट्रिपल सी कोविक सीसी नीड 49 रन्स इन 31 बॉल्स। कहीं ना कहीं ये मुकाबले में मजा आने वाला है क्योंकि 52 ही रन है, लेकिन फिर भी ये मुकाबला तगड़ा होने की संभावना है क्योंकि गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध के रखा है, खास करके राशिद। पहले ओवर की आखिरी गेंद, जासिम के इस बार ज्यादा बाहर है, वाइट बॉल। मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर बढ़ेगा। स्कोर जा पहुंचा अब 4 रनों पे, 4 ऑन बोर्ड, नो लॉस। जसीम यही सोच रहे हैं कि यहां से पहले ओवर में थोड़े से रन को वो बटोरना चाहेंगे। इस बार गेंद बल्ले के बीचों बीच मिड ऑफ अंदर है और उसका पूरा फायदा मिलेगा। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करती हुई गेंद, ये मिलेंगे रन 4 और 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा अब पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए 8 रन। कोविक सीसी पहले ओवर में अच्छी वापसी करते हुई अब कहीं ना कहीं आने वाली 5 ओवर में रनों की बात करें तो 44 रन चाहिए। जो रिक्वायर्ड रन रहे वो लगभग 9 के आसपास है। आप देख रहे हो एशियन क्रिकेट लीग और एशियन क्रिकेट लीग का ये पहले दिन में दर्शकों खचाखच भरा हुआ ये पूरा मैदान और मजा आ गया क्योंकि पहले ही दिन में जिस प्रकार से दर्शकों ने यहाँ पे इस टूर्नामेंट को बड़ा बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उन सभी दर्शकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपका साथ ये हमें हमेशा चाहिए। आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो सारे जो गैलरीज में बैठे हुए दर्शक अभी भी राह देख रहे हैं कि अभी भी एक हाथ गिफ्ट हैम्पर पर उन्हें मिल जाए। ये देखिए, ये काफी खुश दर्शक, ये देखिए, क्योंकि उन्हें पता है हम काफी दूर है अपने देश से, लेकिन वहां पे घर पे कोई तो मैच देख रहा है जो हमें यूट्यूब पे देख के, आपके चेहरे देख के काफी खुश होते रहेंगे। थैंक यू। ये देखिए सारे मुस्कुराते हुए चेहरे एंजॉय कर रहे हैं एसीएल को। उबैद द न्यू बॉलर, उबैद गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे। सामने होंगे बल्लेबाज अशरफ थोड़ा सा जूझ रहे हैं क्योंकि गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है अशरफ की। उबैद गेंदबाजी के मोर्चे पे। ओवर नंबर चलता हुआ अब ये दूसरा, ये गेंद ज्यादा उछाल, यस अंपायर कहते हैं वाइट बॉल। ये 1 बाउंस का भी कॉल होगा, यस अंपायर ने यही कहा कि ये आपकी गेंद काफी ज्यादा उछाल। ये देखिए महिला दर्शक जो इस मैच का लुत्फ उठा रही हैं, जो उनके लिए खास स्टैंड्स बनाया गया है। एशियल कमेटी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने सभी का ख्याल रखा है इस टूर्नामेंट में। 9 रन नो लॉस। इस बार गेंद काफी तेज थी और हवा में भी बॉलर नहीं पहुंच पाएंगे। 1 रन, डबल फिगर में स्कोर जाता हुआ 10 नो लॉस। अब कहीं ना कहीं अशरफ ने भी अपना खाता खोलने के बाद अब जैसिम के पास जाएंगे क्योंकि जैसिम जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक चौका जरूर इन्होंने लगाया और ये पहला मुकाबला है। ओसीसी ने 5-6 ओवर में 51 रन बनाए थे, 52 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है और कोविक सीसी अब तक 10 रन। ओवर नंबर दूसरा बीच मैदान के अंदर आखिरी गेंद पे जो चौका आया था वहीं से मैच थोड़ा सा टर्न होता हुआ। दूसरी ओवर की अगली गेंद, उबैद सामने होंगे बल्लेबाज जैसे। पावर प्ले अभी भी ऑन है। माफ कीजिए, एक ही ओवर पावर प्ले है, इस कारण आप फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन देख सकते हो। पहले ओवर में पावर प्ले का फायदा उठाना चाहिए लेकिन उतना उठा नहीं पाए। अब जैसे थोड़ा सा जूझते हुए 3 गेंदें इन्होंने खेली, 5 रन अब तक बनाए, 10 रन बिना कोई नुकसान। ये लो स्कोरिंग मैच काफी तगड़ा होता है, हमेशा हमने देखा है कमेंट्री करते वक्त, क्योंकि मजा आता है क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस में बल्लेबाज थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि मारे या छोड़े। इस बार रिवर्स एडम करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अच्छी वापसी उबैद, क्या लाजवाब गेंदबाजी है। पहली गेंद थोड़ी सी तेज की थी, थोड़ा बाउंस ज्यादा था, इसी कारण वाइट मिला। गेंदे हुए अब तक 3, स्कोर अब तक 10। जैसे 4 गेंदे 5 रन अब तक अपने टीम के लिए इकट्ठा कर लिए और 52 रनों का लक्ष्य का पीछा है।
कोविक सीसी अब थोड़ा सा यहाँ से अपने टीम को यही कहना चाहेगी कि आपके पास रन कम है लेकिन आपको हर गेंद पे सिंगल चाहिए। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, क्या स्ट्रोक है, व्हाट अ बैटिंग, ये छक्का नहीं अट्ठा। ये देखिए रीप्ले देखिए वापस, मजा आ गया ये स्ट्रोक देख के, जिस प्रकार से पोजीशन बना ली थी। ये देखिए ये गेंद तेज तरार, अपना हेड जिस प्रकार से उन्होंने स्थिर रखा था और क्या स्ट्रोक खेला है, लाजवाब बल्लेबाजी। 6 रन, 16 ऑन बोर्ड। इस बार थोड़ा सा तेज करार गेंद किया, 1 रन के साथ छोर को बदला। ओवर की बात की जाए तो ओवर नंबर दूसरा, लेग बाय के संकेत अंपायर के यहाँ पे आते हुए एक्स्ट्रा मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर पहुंचा 17। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, अभी भी अगर बात की जाए तो आने वाली 25 गेंदों में रन चाहिए 35। 25 बॉल्स रिमेनिंग, 35 रन्स नीड टू विन द मैच। कोविक सीसी ये जिस प्रकार से गेंद को लीव किया, थोड़ा सा शरीर पे जरूर लगी है। ओवर समाप्त होते हुए दो ओवर की समाप्ति के बाद कोविक सीसी 17 रन बिना कोई नुकसान। रन। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अशरफ, 6 गेंदें इन्होंने खेली है, 2 रन अपनी टीम के लिए बनाए। जैसी 6 गेंदें 11 रन। ओवर नंबर तीसरा, वैशाख की पहली गेंद तेज तरार है लेकिन दिशा से भटके है, अंपायर के संकेत तो वाइट बॉल। स्कोर जा पहुंचा 18। वैशाख की बात करें तो अब इनको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा अपनी गेंदबाजी पे। जेसिम और दूसरी जगह अशरफ, ये 2 बल्लेबाज अभी भी डटे हुए हैं। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी 52 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई कोविक सीसी, ये तीसरे मुकाबले में, इसके बाद आखिरी मुकाबला भी आप सभी को मिलने के लिए आने वाला है। द लास्ट मैच, वो भी काफी बड़ा मैच होगा। रिवर्स एडम करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल, बिंदी गेंद आती हुई। अभी भी ये ओवर नंबर चल रहा है तीसरे ओवर की, अभी भी पहली गेंद इन्होंने की है एक वाइड और उसके बाद ये गेंद थी बिंदी। 17। जैसिम को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेंगे वैशाख। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक गेंद हवा में जरूर है, बड़ा विकेट हो सकता है, काफी चेस करना पड़ता हुआ फील्डर को, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद लैंड होगी और 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने इकट्ठा कर लिए। स्कोर जा पहुंचा 20 रन। अभी भी 32 की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओवर नंबर तीसरा, कोविक सीसी पूरी तरह से वापसी करती हुई। पहले ओवर में हालांकि विकेट जाने के बाद थोड़ा सा बैकफुट पर थी जरूर, लेकिन उसके बाद कोई विकेट नहीं खोया, माफ कीजिए, डॉट बॉल गेंदे की थी अशरफ ने, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद है, गेंद को खाली जगह में खेला जरूर है, फील्डर जब तक पहुंचे रन मिलेंगे 4, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। अब ये 4 रन, स्कोर कार्ड की बात की जाए 24 रन। ये देखिए ऑप्शन के ज्यादा बाहर चली गई गेंद और कोई वहां पे फील्डर मौजूद नहीं था, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब 24 रन। ओवर नंबर तीसरा, वैशाख भी थोड़े से महंगे साबित होते हुए। 28 की अभी भी जरूरत, आने वाली गेंदें शेष होंगी ये 21। 21 बॉल्स रिमेनिंग, 28 रन रिक्वायर्ड टू विन द मैच।
थोड़ा सा फासला कम करते हुए बल्लेबाज जयसिंह, वन मैन आर्मी, 9 गेंदे 17 रन, जैसे अनस ने पारी खेली थी। ओहो, तेज दरार, बल्लेबाज ना समझ पाए, कीपर के दस्तानों में गेंद, कोई गलती नहीं, बिंदी गेंद आती हुई, स्कोर रुका हुआ 24 पे। अगली गेंद, इस बार गेंद ने अपना काटा बदला और ये भाग्य का चौका जरूर मिलता हुआ बल्लेबाज जयसिंह को। ये देखिए रिप्ले में देख सकते हो क्या हुआ, जिस प्रकार से गेंद थी, अच्छी गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी। देखिए गेंद डाली, उसके बाद जो बाहरी किनारा लगा, इनटू द गैप, गेंद जिस प्रकार से दौड़ी है, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन यहाँ पे जरूर मिलेंगे। 28 रन स्कोर कार्ड पे है, अब 24 की जरूरत है। इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आनी शेष, लास्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर। वैशाख भी थोड़े से महंगे साबित होते हुए, क्योंकि इस ओवर में रन है अब तक 11। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, ओवर समाप्त होते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में लगे 28 रन बिना कोई नुकसान। अभी भी 18 गेंदों में 24 की जरूरत। और रेड एप्पल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आप सभी के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है रेड एप्पल का, और आपको थोड़ा सा रणनीति बनाने में आसानी होगी। हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, डीजे के पास जाएंगे। रेड एप्पल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आपको देखने को मिलने वाला है। Back in the dugout, and a bite strikes. Oh, the match is pretty much balanced. They were moving very nicely.
28-4-1. The new batter joined there. Fahad. The quick one. There's a bit of fielding there in this. It's all the way from the backward point. Just a single brings back the non-striker. And Jasim is playing really well. 21 from 12. 3 boundaries and a 6 for him. His innings is going to be very crucial. Swing and a miss. Drifting towards the leg side, waiting for the umpire's call. It's going to be a wide. We got to finish one more game this evening, so make sure finish in 35 minutes allotted innings time. 11:45 already in Qatar. Obaid to Mohammad Fahad. Well played. It's a quick one from Obaid. It's placed, pushed towards the covers region. Yes, no, and finally settled down for a single. This pace bowler is creating a lot of pressure to the batting team. Jasim needs to play sensibly from now. Swing and a miss, and good collection behind the stump. Pretty another one. It's beaten completely. It's trying to play that pull shot. It's never easy. Obaid bowling in some good speed. As a packed leg sides fielding. Got a deep square leg, a deep mid wicket, a long on. And the final leg is up in the circle. That's driven towards the cover. There is protection, deep extra cover. Will cut it off. Oh, bit of fumble. Allowed the batter to go for the next shot and throws on towards the keepers and bit lazy there. Very important, 2 more runs. So after the completion of the 4th over, 34-1, they lost the captain. They are pretty much in the hunt to chase this down. It's a modest target, not many scores under their belt, just 52 runs to win. The game number 3 progressing here. And right after this, Sheza 11 taking on S and Alvarez. Sheza had won the toss and Rifan had decided to bat first for the last game of this evening. 2 very strong teams. It's 11:45 past in Qatar, so just got to make it faster. We need to complete all the matches before 12:45 12:45 in the midnight. So coming back to this one, 12 remaining. 18 runs required for Kovac CC to seal this match. They can't ask the better man to be there in this situation. Fahad, the very good all-rounder. Yes, he loves this area. He is too strong on both sides of the wicket. It's absolutely vacant region and it's beaten the man in backward point. And it's got an important placement. It's superb from Fahad using his experience. A much required boundary. The scores are not so much with the chasing down a target of 52. As a perfect man there in the middle. For the batting team to chase this down, he is going to play cleverly. He is not going to take any risks whatsoever. Plenty of deliveries left. Beaten. Outside off some, no signal from the umpire.
So the penultimate over. They just need 14 runs to win. 10 deliveries left. Has it a good one? Has he got enough? I reckon yes! Few inches away from the boundary. A deep fine and absolutely vacant region. Fahad Muhammad was in absolutely good position to play that shot. Plenty of time. It's a 6. No ball has been called. It's a free hit is coming up. Fahad is going to enjoy this. He's got a 6. Width offered, punished towards the deep fine leg. They are pretty much in the chase now. Has been a good chase under pressure. Obaid has created some momentum in this game, but the moment this man arrived in the crease, Fahad Muhammad has taken the control of this innings. What they just need now is 7 runs. The free hit is coming up. One big shot from Fahad. There's movements outside the off some. Fahad is just not able to connect. Bit disappointed there. 7 to win, 1 big 6. The scores will be level. That's a good one. That's a good one. Inside out he played. Couple of bounds. 1 bounce to the boundary. Yes, it is 3 runs to win. 1 more shot from Fahad will seal the victory. Has been a fantastic chase. Spite of having some good bowling from Obaid. His 2 overs. Anas played really well in the last innings. This emplacement is again superb and beaten the man there. That's a winning shot. Fahad Muhammad once again coming and producing the match winning shot, and that sealed the victory. Congratulations. They are to the next stage and very, very well done. There was absolutely no pressure whatsoever. The moment he came in, he concurred at the victory. So Kovic CC winning quite convincingly against OBG. Now they are into the next game. As an announcement, very important one now for all the players, all the 6 hitters. If you can get 3 consecutive sixes. If you can get 3 consecutive sixes, you will get a gift voucher. There's a cash gift voucher from us. So anybody who hits 3 sixes in a row, 3 sixes, you will walk away. A special gift voucher from us. So all brings and brought to you by Techno Media's the season 2 of Asian Cricket League progressing here in Dynamic Sports Ground. And we are going to announce the man of the match in the game number 3. And it goes to a fantastic bowling performance. 2 overs, 3 wickets and 4 runs. It goes to Noman. Noman, if you can come and collect your man of the match trophy right here. And for the next match, Sheza 11, Rifan had won the toss and elected to bat first. I will have the opening batters of Sheza 11. They're up against SNR Warriors. We'll start the last game quickly and we'll finish the formalities for the day number 1 of Asian Cricket League before 12:45 in the midnight. I will see you back tomorrow, sharp 6:45 for the day number 2. It's all happening in Dynamic Sports Ground, the biggest cricket carnival in the country. Asian Cricket League being brought to you by Premier Techno Media. Well supported by Just Us and Auto, the main sponsor. 20 franchises, 4 matches to be played for each teams. 12th of January 2024, we'll have the closing ceremony with the grand finale. And this is live in YouTube. Shreelive, if you're watching anywhere, your friends and families
watching you playing in Dynamic Sports Ground. Please subscribe to the channel and you will watch all the live action right here from Dynamic Sports Ground. We'll be back with the next game in a very short time. And collect your man of the match. Norman. Yes, quick. Is on his way to collect the man of the match. Game number 3. Nine. Anyone having this lucky number 129, you can come and collect your gift hamper. The Dragon Wheel 129. Anybody in the gallery with that coupon number 129, you can come and collect the gift hamper. The last game of the day, number 1 of ACL Season 2, brought to you by Premier Techno Media, supported by Just Us and Auto. We are to the final game. After winning the toss, Irfan had elected to bat first. The last game, which saw that was a run chase quite convincingly. Fahad Mohammed came and just played a couple of very good shots. Govik CC had won the match against OBG. Now, up to the last game of this day, number 1. Over to the live now from Dynamic Sports Ground, Qatar. The day number 1, the last game of this evening between Sheza 11 and SNR Warriors. It's 12:04 in the midnight. Let's start the game. Umpires, are we ready to go? Yes, let's go. 2 opening batters for Sheza 11. Straight away up in the air. Who wants this? An easy one. He's going to miss that. Oh, yes, finally taken. First wicket goes from the very first ball. Without scoring, they lost the opening batter. Well, Jets catch. It was in the air for some time and produced an important breakthrough from the very first ball. Sadiq, back of the length and getting a leading edge, and the fielder making no mistake. Sanat still there, the non-strikers, and the new batter joined Arif.
It's ball number 2. Right on the block hole, not allowing the batter to freeze his arm. It's perfectly right on the money. 2 dots. Sadiq creating that breakthrough from the very first delivery he bowled as a match number 4. As again well executed and equally well played by the batter there. Sanath backs into the crease. Sanath, an important player in this squad. Swing and a miss. Trying to play across the line towards the square leg. Beaten completely. It's a dot again. This time odds off stump, slightly miss on this line. Wide call by umpire. Now the score moved to 2 for 1. Catches the call, beaten the man, backward point raising towards the boundary, and that's gone. That throws the fence, a much needed one. They need a big over to start the power play after losing the first batter from the very first delivery. Sadiq just given a little bit of width outside the off stump, and placement has been superb. 6 for 1. 1 ball to go to complete the power play. Shehzad's 11. Another one. Yes, bang, the stump has come back wrongly after conceding the boundary. First ball wicket and the last ball as well. He completed that. An interesting power play comes to an end. Shehzad's 11 struggling 6 for 2 after the first over. New batter joined there. Mafaz, an experienced campaigner. And we have the lucky winner, coupon number 129. And he's going to get the gift hamper from us, coupon number 129. There will be one more dragon reel right after this match, so do not go anywhere. You have a chance to win gift hampers as well for the spectators who are taken this position in the gallery. The very first time in Dynamic Sports Ground, you have a fantastic galleries being set. Great initiative by Techno Media. It's bringing a lot of innovations in this tournament. The biggest cricket carnival, Asian Cricket League Season 2. Game number 4, and we'll complete the matches for the day number 1 before 12:45. Into the second over. Another pace bowler, Muhammad Jabir Khan. We saw Norman bowled really well in the last game. Now his teammate Jabir Khan.
Oh, it's beaten everyone. The keeper as well. Very quick from Jabir Khan. Sailed towards the third man region for a boundary. A lot of pace. He saw Ubaid, saw Norman. Now, this is Muhammad Jabir Khan, one of the Qatar national player playing in this tournament. He had a fantastic tournament, just got over last evening. SPL now is back here. One of the key bowler you can have in your squad, Jabir Khan. Now there is a third man has been pushed towards the boundary line. Catches the goal, but spectator not even catch that. That's a beautiful shot. Has used the pace of the bowler. They were launched himself towards the square leg. What a good shot against someone like Jabir Khan. He's played a beauty. A little bit of width. Plenty of bat right in the middle of the bat into the zone. Quick one. No single. Oh, the batter in the non-striker's end was struggling there. Very keen to get into the batters. The batting crease. It's a dot ball after conceding that 6. Arif, a very strong player. The batting lineup of Shehzad 11. He is going to play an anchor role here. As up against one of the very quick bowler in Qatar. Edge, and there is a protection there. Tough one. Raising towards the boundary. Yes, it did. There was a fielder. Just not even able to reach. The ball was traveling like a Fraser bullet. A lot of pace generated by this man, Jabir Khan. Once again, you need to have a good fielding for his pace. The score moved to 24-2. Couple of deliveries left in this over. It's turning out to be an expensive over. Already conceded 14. Attempting a reverse, and this occasion third man stopped the ball on time, just a single. It's very tough for the keeper to catch those. Plenty of pace has been generated by this man. Again is coming to Dynamic Sports Ground, the quick Pakistani pace bowler Muhammad Jabir Khan. 24-1 to go to complete this over. That's given wide. He would have considered so many runs. As a kind of bowler, he can definitely come back anytime. A wicket taker, but premium fast bowler. On this side of Western Alvarez. We're missing Imran in the action. Fires is captaining this side. Oh, look at that carry. Movement, it's very, very quick. Even the keeper once again not able to catch the ball. The completion of this over. An expensive one comes to an end. 22-4-2.
Let's make it fast between the overs. Umpires, please note the time taken between the overs. 22-4-2 after 2. Arif and Mufaz have to build a small little partnership here. This was 70 runs coming in the first game, then 54, 56 and 52 was easily chased down by Kovik CC. The bowlers have done really well so far. We saw some brilliant batting as well. (22-4-2) after 2. Striking more than 10 runs per over. Sheza 11 elected to bat first. Rakib into the action. (23) and Mafaz needs to use all his experience here. What they need now is another 25 runs from the remaining deliveries. A pass score on this ground is around 60. Good length, catches the call. Tough one, raising towards the boundary. Deep fine leg region, and they will take it, a much needed one. If we look at the replay, plenty of time for the batter to play that shot. Look at that, using the length of the ball. It's too early. Just in the middle of the bat and pace, raising towards that deep fine leg region for a boundary. Attempting a reverse sweep, good collection behind the stump. Arif is looking solid. He needs to continue. He needs to be there for the next 2 overs minimum to get some runs on the board. Right on the block hole. Good bowling. Keepers all the way from the stump trying to steal a single. Yes, it's good running. Arif was cruising towards the dangerous end. Completed 2 more runs. They need to convert those ones into twos. That's what exactly. After an expensive over from Jabir Khan now. They reached to 30. They lost a couple of wickets. Sheza 11. Swing and a miss. Another dot ball. Yes, attempting a reverse sweep. Catch has been taken behind the stump. Keeper making no mistakes. A big wicket goes. That's an important one. Arif has to depart. He was playing well. But on this occasion, trying to go for reverse sweep. Getting an edge and keep doing the rest. They lost the 3rd wicket. 30 runs on the board. I'll have the strategic timeout. Red Apple strategic timeout. And we'll be back after a very short break from the next 3 overs remaining in this innings. Over to you, Chirag ji.
और मफाज की बात करें तो काफी अच्छा वापसी यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। पहले 2 गेंदों में रन नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद मफाज और रिफाज की जोड़ी गणेश मान गेंदबाजी के मोर्चे पे पहली गेंद पे सिक्सर लगने के बाद अब देखना है किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं, लेकिन काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे बल्लेबाज मफाज। इस बार देखिए ये गेंदबाजी की कला है। आपको अगर पहली गेंद पे सिक्सर लगाए उसके बाद आपको वापसी करनी होती है, और यही कुछ करते हुए गेंदबाज गणेश थोड़ा सा पहली गेंद पे बल्लेबाज ने उनका स्वागत सिक्सर के साथ किया था, लेकिन उसके बाद वापसी जरूर अच्छी हुई। शहजाद 11 और SNR वॉरियर्स के बीच का ये मुकाबला, ये बड़ा मुकाबला है। आज की रात का ये आखिरी मुकाबला होगा, मैच नंबर 4। आज खुद कप्तान इस टीम में नहीं है। अगर हम SNR वॉरियर्स की बात करें तो इमरान, इस बार ये गेंद देखना होगा जिस प्रकार से गेंद को किया है। अंपायर थोड़े से यहाँ पे घूमे जरूर है। व्हाइट बॉल चाहता, गेंद बाहर चली गई थी। व्हाइट +1, इसका मतलब ये 2 रन खाते में जोड़े जाएंगे टीम शहजाद 11 के। स्कोर जा पहुंचा 38, लॉस ऑफ 3। ओवर नंबर ये 4 बीच मैदान के अंदर थोड़ा सा महंगा साबित होते हुए गणेश। पहली गेंद पे सिक्सर लगने के बाद दूसरी गेंद बिंदी और उसके बाद व्हाइट बॉल। अच्छी गेंद है। इस बार तेज तरार गेंदबाजी होती हुई गेंदबाज गणेश की तरफ से। स्कोर अभी भी रुका हुआ 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे। एशियन क्रिकेट लीग का ये पहले दिन में काफी सारे दर्शकों ने इस टूर्नामेंट को सराहा। जिस प्रकार से आज सारे स्टैंड्स फुल थे, उनकी भी तारीफ करेंगे। हमारे बाजू में जो स्टैंड है, ओहो क्या गेंदबाजी हुई। अपील लाउड हो रही है, क्या अपील में उतना दम है? लेकिन थोड़ा सा गणेश कह रहे हैं कि मुझे आवाज आई थी, लेकिन ये आवाज अब किस चीज की आई पता नहीं। लेकिन आखिरी गेंद इस ओवर की आनी अभी भी। आखिरी 3 गेंदें जिस प्रकार से किए और अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदें अब तक की है गेंदबाज ने, 8 रन अब तक खर्च किए। अगली गेंद अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई। इस गेंद को ऑन साइड पे खेला, वहां पे फील्डर मौजूद था। एक ही एक्शन में गेंद को पकड़ा और दूसरे एक्शन में थ्रो किया। एक ही रन, एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 39, 39 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओवर, चौथे ओवर की आखिरी गेंद होगी। 39 रन, 3 विकेट। फास्ट जिन्होंने एक सिक्सर जरूर लगाया था। अच्छी गेंद। ओवर समाप्त होते हुए पे 4। पहली गेंद पे सिक्सर लगने के बाद एक वाइड के 2 रन आने के बावजूद भी गणेश की तारीफ करेंगे, क्योंकि गणेश ने पूरी तरह कंट्रोल रखा ओवर को और स्कोर जा पहुंचा 39, लॉस ऑफ 3। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई SNR वॉरियर्स। ये आप सारे चेहरे देख सकते हो, हालांकि काफी सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरी मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए हमारे कुछ दर्शक आप ऑन स्क्रीन उन्हें देख सकते हो, मैच का लुत्फ उठा रहे और इंजॉय कर रहे। आखिरी 2 ओवर के खिलाना शेष, थोड़ा सा जल्दी कीजिए प्लीज, क्योंकि अभी भी ये अब हम बात करें तो 12:27 हो चुके और अभी भी एक इनिंग आना बाकी। ये देखिए सारे दर्शक अभिवादन करते हुए काफी इंजॉय कर रहे पूरे इस टूर्नामेंट को। एशियन क्रिकेट लीग में काफी सारे गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, आप देख रहे हो जिस प्रकार से लकी ड्रॉज होते हैं, वो उसकी तरफ भी जाना चाहेंगे। दर्शक जो एक हाथ से कैच पकड़े उनके लिए जो इनाम है, जो दर्शक दोनों हाथ से कैच पकड़े उनके लिए भी इनाम है। लेकिन ये गेंद वाइड बॉल है, वाइड बॉल 40 ऑन बोर्ड, 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंद ज्यादा ही बाहर चली गई थी। ये देखिए ये भी दर्शक है जो मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, जहां पे भी जगह मिली वहां से मैच का लुत्फ उठाते हुए सारे दर्शक। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे इंजॉय। क्रिकेट कतर में क्रिकेट का महत्व, दोहा में क्रिकेट का महत्व काफी ज्यादा है। टेनिस क्रिकेट काफी ज्यादा खेला जाता है। कल ही एक टूर्नामेंट यहाँ पे खत्म हुई थी, उसके बावजूद
जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट को प्यार मिला वो भी का सभी दर्शकों का। और देखिए यहाँ पे ये रन जोड़े जाएंगे अपनी टीम के लिए। शेजाज 11, 42 लॉस ऑफ 3। SNR वॉरियर्स अब 5वें ओवर में गेंदबाज नकी गेंदबाजी करते हुए। इस बार चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे कि भाई हो क्या रहा है, गेंद बल्ले पे क्यों नहीं आ रही है। उनका बैट का फ्लो देखे तो काफी जोर से, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल, 42 लॉस ऑफ 3, ओवर नंबर 5वां। इस बार गेंद पैरों पे जरूर लगी है, लेग बाय के संकेत। 43 लॉस ऑफ 3 और ये ओवर नंबर चल रहा है 5वां, 5th ओवर। कहीं ना कहीं रनों की गति को बढ़ाना होगा। एक रन तो जुटाया, खराब फील्डिंग, थोड़ा सा मिस फील्ड, और उसके बाद अब रनों को जोड़ते हुए स्कोर जा पहुंचा 45, लेग बाय के संकेत अंपायर के। फिर से 45 रन स्कोर कार्ड पे। आखिरी गेंद, आखिरी 2 गेंदें आनी शेष है। लॉस ऑफ 4, 3, 45 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष। गेंदबाज नकीब इस बार छोटी गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाते हुए, लेकिन क्या फील्डिंग है। फील्डिंग के एफर्ट काफी अच्छे थे, लेकिन फिर उसके बाद गेंद नहीं समझ पाए और ये चौका आता हुआ। फील्डिंग के लिए तालियां तो बजिए। ये देखिए, आप रिप्ले में देख सकते हो, फील्डिंग में काफी अच्छी फील्डिंग, लेकिन गेंद कहाँ गई है उस फील्डर को पता नहीं था, और इसी कारण वो चौका जाता हुआ। फील्डिंग एफर्ट देखिए, लाजवाब फील्डिंग एफर्ट। खुद कप्तान है वो फैयाज। 49 लॉस ऑफ 3। इस बार ये गेंद देखिए, अब यहाँ पे मिस फील्ड को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्कोर कार्ड की बात की जाए, ओवर समाप्त होते हुए 5 ओवर की समाप्ति। स्कोर कार्ड पे लगे 50 रन, 50 ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 3, और अभी भी आखिरी 6 गेंदें पहले इनिंग की आनी शेष। ये सारे दर्शक अभी भी इंजॉय कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट को। अगर इस मैच की बात की जाए, पहली इनिंग में अभी भी 8 मिनट बाकी है, और 8 मिनट में अभी भी 1 ओवर उन्हें करना बाकी है। थोड़ा सा पुशअप करेंगे तो मजा और आएगा, क्योंकि अभी भी 1 इनिंग आना बाकी है पूरा। ये डकआउट्स थोड़ा सा वहां पे उन्हें भी, क्योंकि उन्हें पता है 10 के अवसर से बल्लेबाजी हुई है। ये डकआउट्स आप शेजाज 11 का देख सकते हो, जहां पे जो खिलाड़ी है वो पूरी तरह से सेट मैच का लुत्फ उठा रहे, एंजॉय कर रहे अपनी पारी को। मुदस्सर आखिरी ओवर लगे, सामने होंगे बल्लेबाज। अच्छी गेंद, लेकिन गेंद में उछाल ज्यादा। वहां पे गणेश गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन दूसरे की कोशिश, लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब होगी? बल्लेबाज को वापस लौटना होगा। मफास कौन आउट हुआ है अब देखना होगा। यहाँ से मफास को विकेट सैक्रिफाइस करनी होगी। देखिए, जिस प्रकार से गणेश ने थ्रो किया था, दूसरे की मांग थी मफास की, लेकिन वहां पे सामने वाले बल्लेबाज रिफास तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए। 50 पे लगता हुआ ये चौथा झटका।
रिफान न्यूमैन इन 51 फॉर 4, 51 पे 4 झटके। मुदस्सर अच्छी बात, अच्छी गेंदबाजी से शुरुआत करते हुए, हालांकि 1 रन। वैसे अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन खाते में जुड़ेगा लेग बाय के संकेत। रिफाज और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर आए। 52 रन स्कोर कार्ड पे लगे। रिफान न्यूमैनिन लेग बाइज के संकेत। इसका मतलब है आखिरी 4 गेंदों में कितने रन जुटा पाएगी टीम शहजाज 11। मुदस्सर बड़े स्ट्रोक की तलाश, लेकिन 1 रन, पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन अच्छी थ्रो। 1 रन, थोड़ा सा फंबल और ये विकेट मिलने वाला है। ये विकेट आएगा, विकेट आता हुआ। और स्कोर कार्ड पे अब जो बदलाव है वो बदलाव हम आपसे जरूर बयां करेंगे। विकेट, थोड़ा सा फंबल हाथ से हुआ और कीपर ने खुद जाके वहां पे स्टंप को बिखेरा। 5 विकेट अब तक गए हैं। स्कोर पर, स्कोर कार्ड पे भी ध्यान होगा। चार विकेट, 53। ओहो हो, व्हाट अ बॉलिंग, क्या तेज गेंदबाजी है। और ये क्या होगा, ये थर्ड अंपायर की ओर जाएंगे। यस, उच्च न्यायपालिका के पास जाएगा ये निर्णय। डिसीजन पेंडिंग। OUT विकेट, आप देखते हो स्क्रीन पे, देख सकते हो रिप्ले किस प्रकार से वो आउट हुए। कीपर काफी तेज तरार थे और इसी कारण ये विकेट। आउट, अच्छी कीपिंग वहां पे देखने को मिलती हुई। 53, लॉस ऑफ 6। ओवर नंबर चलता हुआ, ये आखिरी आखिरी ओवर। 53, लॉस ऑफ 6। मनीष